All right. Good morning, students. Online students, I hope I'm audible. Now, today we are going to continue with our crash course for medieval history. And आज हमें कवर करनी है रीजनल हिस्ट्रीज एंड कल्चरल हिस्ट्री, राइट? सो रीजनल हिस्ट्री में कश्मीर, बहमनी सल्तनत, विजयनगर एटसेट्रा, तो ये सब इंक्लूड किया है। कल्चरल हिस्ट्री में भक्ति एंड सूफिज्म प्राइमरीली, ठीक है, उसके इम्पैक्ट्स, इम्प्लीकेशंस। First question reads, Zainul Abidin is rightly regarded as the Akbar of Kashmir. Discuss. So for this question, हमारी डिमांड क्या है? We are writing about the achievements of Zainul Abidin, mainly focusing on the kind of cultural. Only cultural? Mainly. अच्छा, देखो यहाँ पे हमें करना क्या, बिकॉज द क्वेश्चन इज एक्सप्लिसिटली आस्किंग अस टू डू सो, वी हैव टू इवैल्यूएट ज़ैनुल आबदीन in comparison with Akbar and show how they shared certain similar traits. ठीक है? So comparison of Zainul Abidin with Akbar. ठीक है? Now how should we introduce? If we can provide some information about Zainul Abidin, right? For example, the time period of his reign, 1420 to 70. अकबर का मतलब कितने साल हुए? 50 years रफली. अकबर का सिमिलर. ठीक है, एक सिमिलैरिटी हमको मिल जाती है. हाउ डू वी गेट टू नो अबाउट ज़ैनुल आबदीन? प्राइमरी सोर्सेस क्या हैं? दी जोन राजाज, द्वितीय राजतरंगिणी, which covers the first 35 years of his reign up to John Raja's death, followed by Shivar Pandit's Tritiya Raj Tarangini, also known as the Jain Raj Tarangini. ठीक है, अकबर का अबुल फजल्स अकबरनामा. Another similarity. And finally, in the introduction itself, we need to mention that Zainul Abidin is lovingly remembered as the Butcha of Kashmir. The word Butcha in Kashmiri means the great king, right? Due to his contributions and achievements in various fields, often leading to comparisons with Akbar. ठीक है, अब ये हमने कर लिया. Then what do we need to do in the main body of this question, of this answer? Enlist the achievements of Zainul Abidin in various fields in comparison with Akbar. ठीक है, इसको हम दो तरह से कर सकते हैं.
first we can enlist all the achievements of Zainul Abidin and then compare it with Akbar separately in a different section. But I think that would be a very inefficient way of writing this answer. ठीक है, हमें करना क्या चाहिए कि एक अचीवमेंट लिखा एंड लाइकवाइज अकबर का, ठीक है, दूसरा लाइकवाइज अकबर का. फॉर एग्जाम्पल, Zainul Abidin inherited what kind of a kingdom? A flourishing kingdom or a kingdom in chaos? Kingdom in chaos. And he had to take decisive measures in order to right the ship of the state. And the same thing be said for Akbar also. Yes. Zainul Abidin also took active steps to promote religious tolerance. For example, he recalled the Hindus that had been expelled from Kashmir during the reign of his predecessor. He re-inducted Pandit officials into the state bureaucracy, into the administration. Can similar traits be seen in Akbar's personality also? Yes, policy of Socio-economic. Zainul Abidin had a very strong welfare orientation and saw himself as the father of his subjects. He, for example, took active relief measures for people affected by famine. He also undertook flood relief operations in Kashmir. He also established free kitchens, made hefty donations to charitable institutions, etc. So, वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट जैनुल आबदीन की गवर्नेंस में बहुत स्ट्रांग था. कैन द सेम बी सेड फॉर अकबर आल्सो? यस. यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स देकर के आप कंटिन्यू कर सकते हो. देन जैनुल आबदीन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड सोशल रिफॉर्म. फॉर एग्जांपल, removing the religious distinction between Hindus and Muslims in matter of state policy, abolishing the jizya tax, and taking measures to stop the practice of untouchability. ठीक है. अकबर कुछ ऐसे रिफॉर्म किए, जिजिया पिलग्रिम टैक्स हटाया और साथ में सती भी अबॉलिश करने की कोशिश करी. ठीक. so this also can be addressed. Then Zainul Abidin was also a great builder. Yes, not only did he construct a new Zena lake, but also a new city that was located on the foothills of the mountain, so that people who were being affected because of incessant floods every year, they would not have to face those floods. नौ शहर बनाया है इसने, right? Did Akbar undertake any such infrastructure works? Yes, for example, नया city established किया फतेहपुर सीकरी, apart from a number of other monuments. Zainul Abidin took active interest in the administration of justice. So, impartial justice was one of the important hallmarks of his administration. Did Akbar also exhibit this trait? Yes, he ruled under the dictum that kingship knows no kinship. Zainul Abidin played a very important role in the revival of Shaivism in Kashmir, since he not only gave grants for the reconstruction of destroyed Shaivite temples, but also started or also facilitated the beginning of an interfaith dialogue between Sufis and the Shaivites, resulting in the emergence of a syncretic movement known as the Rishi tradition, right? So,
एंड अकबर ने क्या करवाया? दी इबादत खाना डिस्कशंस. Zainul Abidin also actively worked towards the revival of Kashmiri crafts production industry. How? By inviting bookbinders, carpet weavers, woodworkers, paper makers from all across the world to come and practice their crafts in Kashmir. He gave them many grants and facilitated the training of indigenous talent under foreign masters also. Okay? So, did the Mughals under Akbar also patronize such activities? Yes, Mughals had their own factories known as karkhanas. Zainul Abidin also carried out the military revival of Kashmir, which had seen a decline during the tumultuous reign of his predecessors. He was not only able to recover all the lost territory, but was also able to gain new territory by expelling the Tibetans from Ladakh, the Afghans from parts of Naushera, etc. Okay? So, military and political revival was carried out by him. Did Akbar undertake any imperial conquests, military conquests? Yes, he was the victor of several battles. He transformed the Mughal Empire from a North Indian principality into a prominent world empire. Right? Further, Zainul Abidin was also a patron of art, literature, and education. Giving generous grants to painters, writers, keeping a large army of accomplished writers at his court, and also promoting the study of promoting Sanskrit education at Sharda Peeth, right? Akbar, did he do any such activities? Yes, he was also a patron of the arts, literature, and education, giving generous grants known as Madade Mash to various educational institutions. Madrasas and maktabs were established. He also employed a large number of authors and artists at his court, not only painters but also architects, musicians, etc. कई कई लोगों के आप नाम ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है? So on the basis of this analysis, it becomes clear that Zainul Abidin exhibited many traits of Akbar's personality and governance. And since Akbar is considered to be one of the greatest rulers ever to rule in India, Zainul Abidin should share that pedestal with him. But यहाँ पे यूनिक चीज क्या है अकबर का टाइम पीरियड? He preceded Akbar. He anticipated the liberal reforms and powerful rule of Akbar by more than 100 years. Okay? And therefore, Zainul Abidin's achievements should not simply be considered equivalent to Akbar's, but in some respects, even superior. Okay? Since he anticipated the achievements and activities of Akbar by more than a century. Clear? So this is how we can conclude this particular answer.
आगे बढ़े। इस फॉर्मेट में लिखना हाँ, इस फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में नहीं लिखने के लिए बोल रहा हूँ, यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्मेट. For example, chaos and administrative revival. Zainul Abidin inherited a kingdom in chaos, focused on restoring law and order by recalling experienced officials and combating corruption. Akbar faced initial challenges of instability and decentralized rule, implemented administrative reforms to centralize authority and improve governance. ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हो. Not for this particular answer because it requires a detailed description. टेबल में वहां पे होगा जहां पे आप छोटे छोटे फ्रेजेस यूज करके, सिंगल वर्ड्स यूज करके आप कंपेयर कर सकते हो. एंड टेबल कहाँ पे यूज करना चाहिए? सिमिलैरिटीज एग्जिबिट करने के लिए या डिफरेंसेस? डिफरेंसेस. हमको यहाँ पे सिमिलैरिटीज दिखानी है. ठीक है, पॉइंट फॉर्मेट वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट ओवर हियर. Coming to the next question, was the foundation of the Vijayanagar Empire an expression of Hindu revivalism? इसको अटेम्प्ट करना चाहेंगे? कुछ आइडिया है इसके बारे में कि हिंदू रिवाइवल स्टेट था विजयनगर एम्पायर या नहीं था? यू कैन ट्राई. ठीक है. Alright, I'm starting the timer. The time starts now.
All right. हो गया? तो बताइए, what is the approach that we must take to address this particular question? First introduced with that. नहीं, हमें मेन टास्क करना क्या है? Are we required to simply justify this statement, or are we required to debate it? We have to debate it. Why it appeared to be a Hindu revivalist movement, and then why it should not be considered to be one. So why should we take it to be an expression of Hindu revivalism? First, the kings were Hindu from Sangrama to Fulwad identity. ठीक है, हिंदू रूलर्स थे, और Wasn't constantly in war against the Bahmani kingdom. why revival? हिंदू होने से रिवाइवल थोड़ी ना होता है. So because हिंदू रूलर्स तो बहुत पहले से हुए हैं. Sanskrit and Telugu literature, like Amuktamaliyada and Madhura Vijayanagara. What were the circumstances under which the Vijayanagar Empire was established? Yes, it was a period when the Delhi Sultanate under Muhammad bin Tughlaq had conquered the whole of South India, brought it under Delhi's imperial control. Even the founders of the Vijayanagar Empire, कौन थे ये? The two brothers Harihar and Bukka, the son of the last Yadava king named Sangama, right? They had converted to Islam after being captured in their capacity as feudatories of the Kakatiyas of Warangal from Kampili. They had been restored to Kampili, and then they came into contact with the famous Hindu monk Vidyaranya, who convinced them to convert back into the fold of Hinduism. So he reconverted them, ghar vapsi karwaya. Then they came into contact with Musunuri Kapaya Nayaka. What was happening in South India was that after having completed his conquests of South India, Muhammad bin Tughlaq had transferred his capital from Delhi to Daulatabad, right? And he was trying to consolidate his control. Was he able to do this? मोहम्मद बिन तुगलक क्या अपना कंट्रोल साउथ इंडिया में कंसोलिडेट कर पाया? नहीं, बिकॉज सर्कमस्टांसेस वर नॉट इन हिज फेवर. At the time while he was trying to suppress a major rebellion in the Malabar region, a major plague broke out in his army. ठीक है, तो जितने भी रीजनल गवर्नर थे मोहम्मद बिन तुगलक के, they saw this as a good opportunity to overthrow the imperial control, and almost all of them rebelled simultaneously. इसी में तेलंगाना वाले रीजन में एक मुहिम शुरू होती है हिंदू रिवाइवलिज्म की. Using Hindu religion as a political tool, one of the local feudal lords, Musunuri Kapaya Nayaka, he began a major movement and enlisted the support of all other Hindu rulers in that region. Enlisted among the supporters of this Hindu revivalist movement were Harihar and Bukka. Okay? After establishing the new empire with its capital at Vijayanagar, what were the kinds of activities that they took? क्या किया इन्होंने? Not only that, first thing that they did was to invite Hindu scholars from across the country to come and reside in their capital to solidify the Hindu roots of their newly established kingdom. ठीक है, फिर उसके अलावा और क्या किया इन्होंने? They adopted the traditional Hindu titles such as गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, हैंदव धर्म उद्धारक, हिंदू धर्म प्रतिपालक, हिंदू सुरतान और हिंदू सुल्तान, right? Thus trying to project their status as prominent Hindu rulers. ठीक है, further what else did they do? They patronized very heavily a particular cult of Vaishnavism, right, known as the Virupaksh cult. In fact, the Virupaksh cult was, you can say, inextricably intertwined with the royal identity and the royal ideology. The kings were ruling as living incarnations of the god. इनके जो रॉयल ऑर्डर्स होते थे, they were also signed under the name and title Lord Virupaksh. सीधे भगवान का ऑर्डर आया, भगवान का फरमान आया हुआ है, right? What was the nature of their relationship with the other Muslim powers of that region? Bahmani Sultanate, Madurai Sultanate. Friendly or hostile?
hostile ever since the beginning to the very end. Continuous warfare was taking place. And was this warfare always fought along secular lines या फिर इसमें एक major religious angle भी होता था? There was a major religious angle leading to various communal excesses during times of war. तो मंदिर मस्जिद तोड़ना आम बात था. Massacre of entire populations, it was a normal thing. ठीक है? And on the basis of this, K. नीलकंठ शास्त्री उन्होंने क्या बोला है? That the Vijayanagar state was basically a Hindu state. ठीक है? And since it tried to project itself as the protector as well as promoter of Hinduism in an environment where Hinduism was coming under the onslaught of Islamic aggression, therefore the state would necessarily be peaceful or extremely violent. Violent क्योंकि प्रोटेक्ट करना जरूरी है, प्रमोट करना जरूरी है हिंदुइज्म को, और हिंदुइज्म के ऊपर बाहर से अटैक हो रहे हैं. देयरफॉर इट वाज नॉट ओनली अ हिंदू स्टेट, इट वाज आल्सो अ वॉर स्टेट. ठीक है? तो एक तो हो गया ये पॉइंट ऑफ व्यू विच सेज कि हिंदू रिवाइवल था. दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कि हिंदू रिवाइवलिज्म जो है सब्सटैंटिव नहीं है, इट इज सिंपली अ रेटरिक. ऊपर से देखने में लगता है, अंदर से है नहीं. अंडरनीथ द सरफेस इट इज समथिंग एल्स. व्हाई समथिंग एल्स? सबसे पहले तो अगर हिंदू स्टेट होता, वुड इट नॉट हैव फॉलोड प्रो हिंदू पॉलिसीज एंड एंटी अदर पॉलिसीज? यस, क्या ऐसा देखने के लिए मिलता है? Or were there the same set of laws applicable for all subjects, whether they are Hindus, Muslims and Christians? ठीक है? Had it been a true Hindu revivalist state, would Muslims have been given any religious freedoms? No, but they had complete freedom not only to reside, but also to construct their own religious places of worship and even proselytize their faith. ठीक है? Had it been a true Hindu revivalist state, तो क्या मुस्लिम्स को स्टेट में कोई जगह मिलती, एम्प्लॉयमेंट मिलता? नहीं. बट देयर वर अ नंबर ऑफ मुस्लिम कमांडर्स एंड सोल्जर्स. ठीक है? more than 10,000 soldiers as reported by both Farishta as well as this Niccolo Conti. ठीक है? Then had it been truly a revivalist Hindu revivalist state, would it have borrowed any elements of Islamic culture, art or architecture? Nahi. It would simply have tried to revive Hindu architecture, art and culture. But we see कि especially architecture में there was heavy borrowing of Indo-Islamic conventions, especially in the secular literature. ठीक है? Had it been a truly Hindu revivalist state, so would the rulers of Vijayanagar have ever other Hindu states? No. लेकिन रेड्डीज के अगेंस्ट, वारंग अगेंस्ट उनका 36 का आंकड़ा था. राइट? ये अगर हम बोल रहे हैं दैट विजयनगर एम्पायर वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म, तो वी शुड बी मेकिंग द आर्गुमेंट कि साउथ इंडिया में सिंस बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत रूल अंडर मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि कोई मेजर मुस्लिम पॉलिटिकल प्रेजेंस नहीं था, तो हर जगह पे हिंदू रूल था. And as a result, this Hindu revivalism should have taken place everywhere, all across South India. But was this the case? No. A number of Muslim powers also emerged after successfully rebelling against Muhammad bin Tughlaq, namely the Madurai Sultanate and the Bahmani Sultanate. ठीक है? तो अब ये बताओ कि was the foundation of the Vijayanagar Empire actually an expression of Hindu revivalism or an expression of regional independence against imperial oppression? It was an expression of assertion of regional independence. It is a natural tendency
for the local leaders when all the important criteria for independent rule are present to break away from the imperial control, to have greater control over the resources that are being generated in that particular region, to have more autonomy, to have more power and more prestige. ठीक है, इंपीरियम को सस्टेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? अ सुपीरियरिटी ऑफ फोर्स. ठीक है, so empires are always maintained because of some kind of superiority, either material superiority or superiority of military means or cultural superiority, etc. The Delhi Sultanate under or during these 1330s had started to lose this superiority. It was becoming an embattled state. बहुत सारी structural problems थे, and because of some external factors such as plague, droughts, floods, etc., it was now on the verge of collapsing. Therefore, regional power जो हैं, naturally they are going to follow their tendencies of breaking away from the center. This is exactly what happened. ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं दैट द आइडिया ऑफ हिंदू रिवाइवल डिड नॉट प्ले एनी रोल इन द इमर्जेंस एंड लाइफ ऑफ द विजयनगर एम्पायर? या कुछ रोल प्ले किया? इट प्लेड सम रोल, बट वाज इट द मेन फैक्टर बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर? वो नहीं था. ठीक है, तो व्हाट वाज द एग्जैक्ट रोल दैट हिंदू रिवाइवलिज्म प्लेड? Why did the Vijayanagar rulers try to convince the people that they were governing, that they were the protectors and promoters of Hindu religion? Ideological support, legitimacy के लिए, popular support mobilize करने के लिए. ठीक है, so religion was used by them like all other medieval powers as a political tool. ठीक है, nothing else. तो क्या हम बोल सकते हैं that Vijayanagar Empire was an expression of Hindu revivalism? नहीं होगा. ठीक है, दैट इज द आंसर दैट यू हैव टू राइट. हो जाएगा? ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थ्रो लाइट ऑन द फीचर्स एंड एवोल्यूशन ऑफ बहमनी एडमिनिस्ट्रेशन. इसके बारे में कुछ आइडिया है और डू यू वांट मी टू डिस्कस इट स्ट्रेट अवे? आइडिया नहीं है? देखो, what is the demand of this question? To talk about the features and evolution of the Bahmani administration. इंट्रोडक्शन क्या बोल सकते हैं हम? कैसे शुरू करना चाहिए? The Bahmani Empire flourished for almost 1.5 centuries, or Sultanates flourished for almost 1.5 centuries after its establishment in 1347 till its disintegration into its successor states in 1482. ठीक है, during this period many of its original features or many of the original features of the Bahmani administration were modeled after the which state? The Delhi Sultanate. That the founders of the Bahmani Sultanate had successfully rebelled against. However, it was not a blind aping of the Sultanate administration. There were a number of regional modifications as well. Further,
Bahmani administrative institutions were not static and kept on evolving continuously. ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर को शुरू कर सकते हैं. व्हाट हैव वी डन? टाइम पीरियड बता दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन का बैकग्राउंड रूट्स बता दिए हैं, रीजनल मॉडिफिकेशन से ब्लाइंड एपिंग नहीं था वो बता दिया है, एंड देयर वाज कंटिन्यूअस एवोल्यूशन, दैट आल्सो वी हैव सेड. So we have given ourselves a good foundation to address the basic demands of the equation. Features और evolution के बारे में बात करनी है हमें. Features, evolution. Now, how to actually perform the task of discussing the features and evolution? कैसे करना चाहिए? पहले सारे फीचर्स लिस्ट कर देने चाहिए, फिर उसके बाद उसमें एक एक करके चेंजेस बताने चाहिए, या फिर सारे फीचर्स के साथ के अंदर क्या क्या एवोल्यूशन हुआ वो करना चाहिए? सेकंड वाला. ठीक है, सो हमें अब क्या करना होगा? डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन करना होगा. वी नीड टू टॉक अबाउट वेरियस लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सच एज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, provincial administration, local administration, military administration, revenue administration, एंड फाइनली इनको समेशन करते हुए ब्रॉडर ट्रेंड्स ये बताने चाहिए. ठीक है, एंड देन वी कैन गो अहेड एंड कंक्लूड दिस पर्टिकुलर आंसर. सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या देखने के लिए मिलता है? हु वाज द लिंचपिन ऑफ द एंटायर स्टेट? The Sultan. Theoretically he was an autocratic ruler and had absolute control over each and every aspect of administration. Did the Sultan conduct all the affairs of the state single-handedly, or did he follow the Sultanate's portfolio system of administration, Diwan system? दीवान सिस्टम यहाँ पे भी लगता था. सो वेरियस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट, रॉयल ऑफिशियल्स वर आल्सो इन्वॉल्वड इन द ओवरसीइंग ऑफ provincial and local administration. So there was linkage between the different levels of administration. ठीक है, provincial administration में क्या देखते हैं? At the time of its establishment, the Bahmani Sultanate was divided into how many provinces? 4 provinces. ठीक है, इनको क्या बोलते थे? तरफ. इनके गवर्नर्स को तरफदार बोलते थे, राइट? Was the position of the tarafdars of the Bahmani Sultanate the same as the provincial governors of the Mughal Empire, या फिर उनसे ज्यादा पावर ये एंजॉय करते थे? उनसे ज्यादा पावर एंजॉय करते थे. फॉर एग्जाम्पल, दीज वर हेरिडिटरी ऑफिशियल्स. सबसे पहली बात तो दे वर नॉट अपॉइंटेड नॉर कुड दे बी रिमूव्ड. Further, the tarafdars also at times served as central officials, central government officials. तो royal ministers की position भी ये hold करते थे. And therefore, royal administration में भी there was an element of hereditary officialdom, hereditary officials. ठीक है? Further, they had almost autonomous military and economic powers. ये अपनी मर्जी से कोई भी जहां पर कोई भी नया टैक्स लगा सकते थे, कोई भी नया किला बना सकते थे. And they were the ones who oversaw the administration of revenue as well as justice. There was very little administrative oversight from the center. ठीक है, चेंज कब आता है? अंडर महमूद गवान.
द प्राइम मिनिस्टर और वकील उस सल्तनत अंडर मोहम्मद शादी थर्ड, राइट। ये क्या करने की कोशिश करेगा? इज ही गोइंग टू ट्राई एंड एम्पावर द तरफदार्स मोर और इज ही ट्राइंग टू अंडरमाइन देयर अथॉरिटी? अंडरमाइन कैसे करेगा? जो इनका मटेरियल बेस है, द एम्पायर वाज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस, ये सेंटर वाला है। नाउ इसको 8 प्रोविंसेस कर देगा, आधी हो गई वैसे ही पावर, ठीक है। सेकेंडली, ये जो नए वाले बंदे हैं, आर दे गोइंग टू बिलोंग टू द सेम ग्रुप एज द ओल्ड तरफदार्स और विल दे बिलोंग टू अ न्यू ग्रुप? न्यू ग्रुप। तो अफाकीज को तो अलग अलग एथनिक ग्रुप से नोबिलिटी में, डेक्कनीज एंड अफाकीज, अफाकीज वर फॉरेनर्स, तो अब फॉरेनर्स को भी एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा जगह मिलने लग जाएगी, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नर्स की तरह उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। Is he going to allow the continuation of hereditary officials in central administration, or is he going to introduce the system of royal patronage? Royal patronage. So hereditary rights of the tarafdars in central administration, they were abolished. Further, he is going to try and intervene in the revenue administration and local administration. कैसे? जो रेवेन्यू कलेक्शन एंड असेसमेंट राइट्स थे वहां पर ये चेंज करेगा। किस वाले एरिया में, कलेक्शन में या फिर असेसमेंट में? असेसमेंट में। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सर्वे एंड मेजरमेंट टू एस्टिमेट द रेवेन्यू लायबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी पेजेंट, एंड हु यूज्ड टू कंडक्ट द सर्वे एंड मेजरमेंट, द फिक्सिंग ऑफ द रेवेन्यू लायबिलिटी? प्रोविंशियल ऑफिशियल्स और सेंट्रल ऑफिशियल्स? रॉयल ऑफिशियल्स, सेंट्रल ऑफिशियल्स करते थे, ठीक है। फर्दर, ये तरफदार्स का मेन सोर्स ऑफ पावर क्या था? That they were able to control the important fortified settlements in the particular province. अब ये क्या चेंज करेगा महमूद गवान? He would say that the tarafdars will now be able to have autonomous control only over the fort that they were personally administering, ठीक है। बाकी इलाके के जितने भी किले हैं, they are now going to be under the official of royal, under the administration of royal officials, ठीक है। तो जो उन फोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, द किलेदार्स, they were now assigned regular salaries by the state, either paid in cash or in the form of land grants, ठीक है। तो they were stripped away from the control of the तरफदार्स। ये चेंजेस होंगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या देखते हैं हम? The tarafs were divided into sarkars and sarkars into parganas. And parganas were simply collection of villages. इसके बाद villages आते हैं। Before this, at the sarkar level, who used to appoint all the administrators, revenue assessors, collectors? Tarafdars used to appoint. Now they are going to be appointed by the central government, ठीक है। So यहाँ पर centralization introduce किया जाएगा। परगना और विलेज लेवल में there was no official control, so to speak of, even before महमूद गवान। तो यहाँ पर अगर हिंदू विलेज है तो एक असेंबली होती थी, पॉपुलर असेंबली नोन एज गोत सभा, और मुस्लिम विलेज है तो द असेंबली वाज नोन एज मजलिस। They enjoyed autonomous control over local administration. तो रेवेन्यू हो गया, जस्टिस हो गया, ऑल दीज थिंग्स, लॉ एंड ऑर्डर, दैट वाज मेंटेन्ड बाय देम। हाँ, एक चीज होगा, क्या? रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में जो असेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज नाउ गोइंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम दीज लोकल ऑफिशियल्स, विल बी असाइन्ड टू दी रॉयल ऑफिशियल्स। विलेजेस में एक फ्यूडल सिस्टम नोन एज दी बलूटेदारी सिस्टम। This used to be in place. Who were the balotedars? A collection of 12 hereditary service providers. तो इसमें अपर कास्ट लोग भी आ जाएंगे, लोअर कास्ट लोग भी आ जाएंगे, सच एज
the village watchman, the village washerman, the village dairy provider, the village priest, the village barber, etc. इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स, इनका एक असेंबली होता था. ऑल द इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द विलेज वर टेकन बाय देम, राइट. इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, the role of patils was also significant. कौन होते थे ये? The landed class who were also serving as the hereditary village chiefs. ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ इलेक्शंस नहीं होता था, हेरिडिटरी विलेज चीफ्स होते थे. दे वर दी वंस हु वर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. ठीक है, तो ये इसमें कोई मेजर चेंज नहीं आएगा. दिस इज गोइंग टू रिमेन अनटच्ड. मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री किन किन कंटिजेंट्स को कंटेन करती थी, क्या क्या होता था इसमें? अ फोर्स ऑफ इन्फेंट्री, फुट सोल्जर्स, पैदल सोल्जर्स होते थे, कैवलरी होता था, एलिफेंट फोर्स होता था और आर्चरी फोर्स होता था. ठीक है, सो दीज वर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द मिलिट्री. बिफोर महमूद गवान कैसा सिस्टम था? फ्यूडल मिलिट्री, राइट. So while the king had his own troops, had his own royal army, his was not the only army within the empire. और armies किसके पास होती थी? तरफदार्स के पास होती थी, who used to draw their own soldiers from the किलेदार्स, the keepers of the forts. ठीक है, महमूद गवान क्या करने की कोशिश करेगा? सेंट्रलाइजेशन ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. हाउ? किलेदार्स को ये तरफदार से हटा करके अपने कंट्रोल में ले आएगा. ठीक है, सो सेंट्रलाइजेशन. फर्दर सेंट्रलाइजेशन का एक हॉलमार्क होता है यूनिफॉर्मिटी. इन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ इज ही गोइंग टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्मिटी? चेन ऑफ कमांड के थ्रू. तो यूनिट्स ऑफ 500 सोल्जर्स वर क्रिएटेड फॉर मेंटेनिंग द डिफरेंट फोर्ट्स. ठीक है, तो कोई बड़ा फोर्ट है तो उसमें मान लो 50,000 सोल्जर्स होंगे, कोई छोटा फोर्ट है तो 500 सोल्जर से भी काम चल सकता है, बट इन मल्टीपल्स ऑफ 500. एंड उनके जो कमांडर्स हैं, they were going to be arranged in a decimal pattern. ठीक है, तो 50, 500, 5,000 एटसेट्रा, 50,000 एटसेट्रा, इस तरह के. एंड each soldier's salary and emoluments were fixed. Each commander's salaries and emoluments were fixed. Either they could be paid in cash or in kind form. ठीक है, so centralization would be carried out. Revenue administration we have already addressed. पहले क्या सिस्टम होता था? Provincial system of revenue. There was administrative, you can say heterogeneity. बाद में homogeneity and centralization. ब्रॉडर ट्रेंड्स क्या देखने के लिए मिल रहे हैं हमें? इनिशियली decentralized and feudal administration towards centralization. अच्छा, मिलिट्री में एक और चेंज किया. In order to reduce the hold of the local तरफदार्स over the army, कुछ आउटसाइडर्स को भी अब मिलिट्री में इंडक्ट किया जाएगा. Some new commanders and soldiers are going to be introduced. कौन? नहीं, डेक्कन रीजन में देयर वाज एन अनटैप्ड मिलिट्री मार्केट जो महमूद गवान ने पहली बार टैप करने की कोशिश करी. कौन? मराठास, द लोकल वॉरियर्स. सो मराठास were invited to join the Bahmani forces as both mercenaries as well as regular soldiers. और उनके जो सरदार, जो चीफ्स थे, how were they induced to come and serve within the military?
इनको बड़ी बड़ी जागीरें ऑफर करी गई, हेरिडिटरी राइट्स, टाइटल्स ऑफर किए गए. तो व्हाट वाज महमूद गवान्स आइडिया? that they could emerge as a powerful check against the ambitions of the local kilidars as well as the tarafdars, both the Deccani and the Afaki nobility. ठीक है, तो ये चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे हमको. एंड रिजल्ट क्या होता है? महमूद गवान का पीरियड ऑफ सर्विस क्या है? रफली 1460 to 82. Why is this date significant? It coincides with the disintegration of the बहमनी सल्तनत. तो कुछ पता लग रहा है कि महमूद गवान के जो रिफॉर्म्स थे, हाउ वर दे रिसीव्ड? वर द ट्रेडिशनल एलिट्स हैप्पी विद दीज रिफॉर्म्स और वर दे डिससैटिस्फाइड? Dissatisfied. There was a great degree of dissatisfaction, right? And there was a major conspiracy afoot. क्या conspiracy? To remove Mahmud Gawan, to restore the status quo ante, and to transform the Sultan, who was weak and pliable, into a puppet Sultan. ठीक है? So Mahmud Gawan ultimately fell prey to this conspiracy as well. And as soon as he was removed from the scene, क्या हुआ? The Bahmani Sultanate disintegrated. ठीक है? And what does this tell us? The nature of the reforms introduced by Mahmud Gawan क्या थे वो? Not only progressive but probably too radical. ठीक है? So traditional Bahmani administration was probably not ready to withstand the radical changes adopted by Mahmud Gawan, resulting in its disintegration into the 5 successor Deccani Muslim states, namely Ahmednagar, Bijapur, Berar, बीदर एंड गोलकोंडा. ठीक है, तो इस नोट के ऊपर हम कंक्लूड कर सकते हैं. क्लियर है इतना? आगे बढ़े. नाउ आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसको पढ़ा जरूर होगा, बिकॉज यू गाइज वर टेलिंग मी कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं. तो व्हाई इज देयर अ प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस डाउन? जैसे मैंने अभी आपको बोला कि लिखना चाहोगे, तो आप लोगों ने बोला कि नहीं, डिस्कस कर दो. अच्छा, तो देखो, इन क्वेश्चंस को ना एड्रेस करने का एक ट्रिक है कि इफ यू आर एबल टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ फ्रेमवर्क. वो फ्रेमवर्क कहाँ गया? अच्छा, डिलीट कर दिया मैंने. कि प्रोविंशियल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन. So the task before you, what you are actually doing is you are dividing it into very easily, let's say digestible morsels. तो आपके लिए आसान हो जाता है. Plus it also gives proper structure to your answer. तो एग्जामिनर जब देखता है इस तरह का एनालिसिस, उसको लगता है कि हाँ, लड़का ठीक से पढ़ के आया हुआ है, कैंडिडेट ठीक से पढ़ के आया हुआ है. He has understood the topic, he has appreciated the actual demands of the question. ठीक. तो इस तरह से उसको अप्रोच करने की कोशिश किया करो. ये नहीं कि पेन उठाया और सिंपली पैराग्राफ फॉर्म में लिखते चले गए. दैट इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी यूजफुल. कई जहां पे उसकी जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे नहीं है. यू नीड टू बी अवेयर कि एग्जैक्ट डिमांड्स क्या हैं एंड व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू ऑल्सो.
ठीक है, तो इस तरह से एनालाइज करने की कोशिश करोगे। सो इवन फॉर दोज एरियाज जहां पे हो सकता है आपका कंटेंट थोड़ा वीक हो, यू विल बी एबल टू परफॉर्म सैटिस्फैक्टरली। हो सकता है एक्सेप्शनल ना हो, लेकिन फिर भी आप हो सकता है 40% मार्क्स सिक्योर कर सको। ना अटेम्प्ट करने से तो बेहतर ही है 40% मार्क्स। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। Describe in detail about the foreign travelers accounts which gave information of the Vijayanagar Kingdom. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि आपसे ना लिखवाना चाहिए या डिस्कस करना चाहिए। देखते हैं कि क्या है। तो क्या बोलना है इंट्रोडक्शन में कि Vijayanagar Empire had emerged as the major military, economic, political and cultural power of the medieval world। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे बहुत सारे पतंगे जैसे आग की तरफ आते हैं, फॉरेन ट्रैवलर्स, मर्चेंट्स एंड डिप्लोमैट्स, एक्सप्लोरर्स, एडवेंचरर्स, दे आर गोइंग टू बी ड्रॉन टुवर्ड्स विजयनगर। ठीक है, एंड मेनी ऑफ देम हैड लेफ्ट बिहाइंड विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सिटी, सोसाइटी एंड लाइफ इन द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, कौन कौन आए उसका एक क्रोनोलॉजिकल सर्वे अब हमें कंडक्ट करना है। कौन कौन आया? फर्स्ट, निकोलो कॉन्टी। कहां से था? इटली। When did he visit? 1420 during the reign of Devraya the First। क्या ऑब्जर्वेशन किया है? He has described the city of Vijayanagar calling it as large and beautiful as Rome। He has also talked about the prevalence of slavery and sati in the Vijayanagar Empire। He has also talked about the vast military presence with thousands of men employed in the army। Next, Abdur Razzaq। When did he visit? 1440s। What was his nationality? He was Persian. He was from Herat। He visited the Vijayanagar Empire during the reign of Devraya II। तो उसको सिंपली इस नोटेशन के थ्रू आप लिख सकते। ठीक है, who was he? Was he a merchant, explorer or diplomat? He was a diplomat and scholar। He had been sent to the Vijayanagar court as the royal ambassador of a Central Asian king। His name was Shahrukh Mirza। He was the ruler of Herat। He belonged to the Timurid dynasty, जो आमिर तिमूर का dynasty। He was one of his descendants। जैसे बाबर था ना, वैसे ही वो भी था। अच्छा, now in India, after having lived here, he wrote a major travelogue in Persian। क्या नाम रखा है इसका? मतलाउ सदाइन व मजमाउल बहरेन। ठीक है, मीटिंग ऑफ द टू स्टार्स एंड द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द टू ओशंस। टू स्टार्स, देवराय द सेकंड एंड his own patron Shahrukh Mirza। Two oceans, the Islamic and Hindu civilizations। ठीक है, what has he talked about? He describes the wealth and splendor of the capital। क्या बोलता है? The market of Vijayanagar is 10 times larger than the market of Herat। He also calls Vijayanagar the largest and most well-provisioned city in the world। He informs us that traders of precious metals and jewels flocked its streets and bazaars, and the market sold every commodity imaginable। Vijayanagar state was extremely rich, and the treasury of the king was filled with molten gold nuggets। He says that Vijayanagar was surrounded by a set of 7 fortification walls। तो ज्यादातर cities में 2 या maximum 3 walls होती थी, यहाँ पर 7 walls। And he also praised the use of streams, running streams and canals within the city। So it had the ability to withstand extremely long sieges also, क्योंकि पानी की कभी कमी नहीं होने वाली है। Then he talks about the military strength of Vijayanagar। बोलता है कि आर्मी में 11 लाख सोल्जर्स थे and Vijayanagar controlled 300 ports as well। Like Conti, he has also talked about the prevalence of the sati system and gambling were not only legal, rather they were also regulated by the state। The state derived taxation income from it। ठीक है, two foreign travelers during the reign of Krishna Dev Raya, दोनों पोर्चुगीज। कौन कौन? डोमिंगो पेज एंड ड्यूटेर्टे बारबोसा। Who was Domingo Pez? He was the Portuguese ambassador at the court of Vijayanagar from Goa। ठीक है,
and therefore he came into direct contact with the king. तो किसके बारे में बात करेगा? The king, his court, his courtiers, administration, etc. क्या बताया है किंग के बारे में? That he was a warrior poet. His entire body was covered in battle scars. He was also very inspired and impressed by Krishna Dev Raya's sense of justice and duty. He has also talked about the Nayankara system of feudal military organization administration. Then he has also talked about Vijayanagar's fortified urban landscape. Duterte Barbosa, he was a Portuguese traveler. Sorry, he was a Portuguese trader. तो ये किसके बारे में बात करेगा? Industry and trade, the society of Vijayanagar, the city of Vijayanagar, etc. Talked about the shipbuilding industry, the import of diamond and precious stones from Burma, silk from China, and black pepper from Malabar. He has also talked about the prosperity of Vijayanagar, describing the city as very populous with wide streets and large palaces. He also talks about the tolerant society, king's attitude towards religious communities, and he also talks about the extensive use of elephants and horses by the king and conflicts with the neighboring rulers. Then we have Ferrano Nunes. He was also a Portuguese traveler. He was a Portuguese horse trader who visited the Vijayanagar Empire some years after the death of Krishna Dev Raya during the reign of Achyuta Raya. क्या बोला है इसने? He has talked about the society of Vijayanagar primarily. He says that women enjoyed prominent position within the society. He has talked about the presence of women scribes, wrestlers, astronomers, musicians, and fortune tellers. ठीक है? He has also social evils such as sati and child marriage. He has also talked about Brahmins, whom he praises heavily for being highly intelligent and having good record keeping skills. And according to him, the rulers of Quinlon, that is Kollam, Malabar region, mein, Sri Lanka, Pulicat, Pegu and Tenasserim in Burma, and Malaya, Malaysia, they paid tribute to the Vijayanagar ruler. Okay? And then we have Cesare Federici. In 1567, he was an Italian traveler who visited during the reign of the Arividu ruler Tirumal Raya. He was the brother of Ram Raya. Okay? Now, he visited Vijayanagar shortly after the Battle of Talikota, following which the city of Vijayanagar itself had been ransacked and burnt. Okay? So, he talks about the partly destroyed city after the Battle of Talikota. He also talks about the unsuccessful attempt by the rulers of the Aravidu dynasty, that is Tirumal, to re-establish the Vijayanagar capital. Were they successful? No. Although they tried to re-establish the capital at Vijayanagar, they were not able to do so. Therefore, they had to permanently shift their capital first to Chandragiri and then to Penugonda. Okay? And finally, he contributed to understanding the city's history during a period of transition. तो हमें क्या देखने के लिए मिलता है from the accounts of these foreign travelers? We get a full chronological profile of the Vijayanagar Empire from its early beginnings to its youth and finally to its old age and decline. And what are the different aspects that these travelers have talked about? About almost every aspect of life in the Vijayanagar Empire, ranging from economy to polity to military to society and culture also. ठीक है? So full fledged picture देखने के लिए मिलता है from the account of these foreign travelers, and thus the accounts of these foreign travelers are extremely useful for giving color to the historical narrative about Vijayanagar. ठीक है? तो एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर क्रिएट होता है फ्रॉम द इंडिजिनस टेक्स्ट एंड द इंस्क्रिप्शंस. उसको फुल पिक्चर कौन देता है? दीज फॉरेन अकाउंट्स उसमें जान फूक देते हैं एक तरह से. ठीक है? दैट इज द नोट ऑन विच वी शुड कंक्लूड दिस पर्टिकुलर आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Why is the Vijayanagar Empire called the cultural capital of the South? तो आई थिंक ये अटेम्प्ट कर लेना चाहिए. कल्चरल कैपिटल ऑफ द साउथ क्यों कंसिडर किया जाता है इसे?
I'm putting 9 minutes on the board and your time starts now.
सो बताइए, व्हाई इज विजयनगर कॉल्ड द कल्चरल कैपिटल ऑफ द साउथ? यहाँ पे बेसिक डिमांड क्या है क्वेश्चन का? And discuss different subsets of culture like architecture, literature, हम्म religious art, हम्म festivals which were developed during this period, हम्म the temple architecture, as a city architecture, the flocking of people from all over the ठीक है, so we need to talk about the cultural efflorescence within the Vijayanagar Empire by discussing the various aspects of cultural development within it. है ना? ये बोल रहे हो आप? Is this sufficient to address the demands of the question? नहीं, इसके अलावा और कुछ के बारे में बात करनी पड़ेगी। क्या? What were the factors behind this cultural influence? And apart from that, comparison with other regions in South India. ठीक है, बाकी के साउथ इंडिया का कल्चरल प्रोफाइल कैसा था? वहां पे भी कल्चरल एक्टिविटीज का सेम पेस पे हो रही थी और हैड द पेस ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट इन विजयनगर एम्पायर फार आउटस्ट्रिप्ड ऑल अदर रीजन्स। वो एड्रेस करना है। किस ऑर्डर में इन डिमांड्स को एड्रेस करना चाहिए? पहले ये करना चाहिए, पहले ये करना चाहिए, पहले कंपैरिजन करना चाहिए। इनफैक्ट दिस शुड फॉर्म द इंट्रोडक्शन सो दैट यू कैन क्रिएट अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट कि भाई देखो बाकी जहां पे क्या हो रहा था और विजयनगर में क्या हो रहा था। सो विजयनगर कल्चरली स्पीकिंग इमर्ज्ड एज अ बीकन ऑफ लाइट इन अ सी ऑफ डार्कनेस। क्यों? आसपास के जो भी प्रोमिनेंट किंगडम्स थे, पेट्रन्स ऑफ साउथ इंडियन कल्चर, हिंदू आर्ट, ऑल ऑफ देम हैड बीन डिस्ट्रॉयड। किसकी बात कर सकते हैं हम? यादवास की बात कर सकते हैं, काकतियास की बात कर सकते हैं, होयसालास की बात कर सकते हैं, दी पांड्यास उनकी बात कर सकते हैं। ठीक है, सो द कैंपेन्स ऑफ द टर्किश रूलर्स फ्रॉम द नॉर्थ beginning from Alauddin Khilji ending with Muhammad bin Tughlaq had stripped away the cultural you can say vitality of South India. ठीक है, so we can say that introduction में the establishment of Turkish rule in South India had resulted in the demise of its cultural powers, namely the Yadavas of Devgiri, the Hoysalas of Dwar Samudra, the Warangals, sorry, the Kakatiyas of Warangal, and the Pandyas of Madurai. And therefore, it was up to the Vijayanagar Empire and its rulers to not only revive but also protect and promote South India's distinct Hindu culture. ठीक है,
तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। देन क्या एड्रेस करना चाहिए? फैक्टर्स शुड बी एड्रेस्ड। मेन बॉडी के दो पोर्शंस, फैक्टर्स एंड various dimensions of cultural expression with examples wherever suitable। ठीक है, फैक्टर्स क्या है? The Vijayanagar state itself was structured to emerge as a major patron of the arts and culture। क्यों? आइडियोलॉजिकल रूट्स ही उसके वही थे। The Vijayanagar rulers tried to project themselves as the protectors and promoters of Hindu culture। Further, what kind of a period was this in South India's history, regional history? A peaceful period or a chaotic and violent period? Chaotic and violent period, and the Vijayanagar rulers needed to mobilize the support of the local population। कैसे? कुछ मटेरियल मेथड्स के थ्रू और कुछ आइडियोलॉजिकल मेथड्स के थ्रू। आइडियोलॉजिकल मेथड्स क्या होंगे? द प्रमोशन ऑफ हिंदू आर्ट, कल्चर, रिलीजन एटसेट्रा। सो टू गेन popular support, and so the rulers were not only willing to promote a strong Hindu identity but in a sense were compelled to do so as well। ठीक है, फर्दर नीलकंठ शास्त्री ने विजयनगर एम्पायर को कैसे डिस्क्राइब किया है? एज अ हिंदू स्टेट एंड अ वॉर स्टेट। वॉर स्टेट में एक बेसिक फीचर होता है क्या? इट एग्जिस्ट एंड एक्सपैंड्स थ्रू वॉरफेयर। एंड ऐसे में जो एक्चुअल पावर होता है दैट बिकम्स डिस्ट्रीब्यूटेड। किंग नीड्स टू शेयर पावर विद whom? Not with the provincial governors but with his top military officials, and the elements of feudalism start to emerge। feudalism जब emerge होता है तो what do the important feudal lords desire? क्या desire करते हैं? They desire greater autonomy and also legitimacy, because they want to also perform the same functions in their particular regions as the rulers। ठीक है, और वो कैसे उनको लेजिटिमेसी मिलेगा? बाय ट्रांसफरेंस ऑफ द राइट टू प्रमोट हिंदू रिलीजन। ठीक है, आइडियोलॉजिकल मीन्स के थ्रू। क्लियर है? सो फ्यूडलिज्म became an important factor for cultural expression। Will this cultural expression take place within the city of Vijayanagar or outside? Outside. For example, नए टेम्पल्स बनेंगे बट इन दी डिफरेंट fiefdoms अवे फ्रॉम विजयनगर। चंद्रगिरी में बनेंगे, चिदम्बरम में बनेंगे, मदुरई में बनेंगे, देन दिस सीतनावसल में caves are going to be made, Lepakshi temples are going to be constructed, and who is going to construct all these? The feudal lords। ठीक है, तो विजयनगर state itself was structured to emerge as a cultural state। This is the main factor। Is this much clear?
देन डायमेंशंस ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन, आई एम श्योर ये वाला आप लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा। यही किया था? अच्छा, तो देखो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आंसर भी उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अभी आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि अगर आप ये बाकी चीजें भी इंट्रोड्यूस करते तो क्वालिटेटिवली आपका आंसर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता था। अभी जो आपने लिखा है दैट आंसर सीम्स टू बी इनकम्प्लीट इन योर आईज राइट नाउ। और क्यों लग रहा है? क्योंकि इसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है, फोरग्राउंड नहीं दिया है आपने इसका, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव। अच्छा, आप ये बता दो कि किन डायमेंशंस के बारे में बात कर सकते हैं हम? सबसे पहले लिटरेचर, लैंग्वेज, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, लिटरेचर, स्कल्पचर भी एज पार्ट ऑफ टेम्पल आर्ट, सॉरी आर्किटेक्चर, sculpture, not only stone sculpture but also bronze sculpture. Apart from this, anything else? Theater, yes, festivals, etc. ठीक है, इनके बारे में हम बात कर सकते हैं। एक और एलिमेंट हमको इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्या? दैट while the Vijayanagar Empire was a Hindu state, did it tolerate only Hindu culture or was it welcoming of all cultures? Welcoming of all cultures. तो यहां पर आपको एक एलिमेंट ऑफ सिंक्रेटिसिज्म और कल्चरल एक्सचेंज का भी पॉइंट ऐड करना चाहिए। ठीक है, दैट इट बोरोड cuisine, customs, architectural techniques and concepts in painting from not only Muslims but also Christians, from not only indigenous people but also foreign cultures। ठीक है, क्योंकि ये सबके कांटेक्ट में थे। क्लियर है? एंड देन फाइनली कंक्लूजन। कैसे करना चाहिए कंक्लूजन? कल्चरल कैपिटल था, हम ये क्लेम को कैसे सब्सटैंशिएट कर सकते हैं? That it became the medium for the preservation of the indigenous culture of South India and proved to be an important link between ancient and modern South Indian culture। ठीक है, अगर विजयनगर एम्पायर नहीं होता तो प्रॉब्ली ये ट्रांसमिशन नहीं हो पाता। ठीक है, सो but this is not to say that in its attempt to preserve the original South Indian culture, it rejected all external influences. Rather, at the same time, it also welcomed other influences and thus not only preserved the indigenous culture but also enriched it। ठीक है, हो गया। आंसर को इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे कलपुर्जे लगा करके गाड़ियां और इमारतें बनाई जाती है ना, ऐसे ही इस तरह से मैन्युफैक्चर करते हैं उसको। ठीक है,
क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा गया व्हाई इज विजयनगर एम्पायर कॉल्ड एज कल्चरल कैपिटल, व्हाई इज विजयनगर एम्पायर कॉल्ड, फैक्टर पे हाँ अगर, लेकिन देखो बात वही है कि अगर आप केवल उसी पे कॉन्सेंट्रेट करोगे ना तो द आंसर इज गोइंग टू लैक दैट नैरेटिव। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक कहानी बताई है, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब तक आप उसका बैकग्राउंड नहीं बताओगे कि भाई विजयनगर एम्पायर को अगर कल्चरल कैपिटल बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके पहले सब बर्बाद हो चुका था, राइट? एग्जैजरेट करना नहीं होगा, एग्जैजरेट करना नहीं होगा, बिल्कुल। क्या बहमनी में भी कल्चरल डेवलपमेंट हो रहा था, बट वी आर सेइंग कि कल्चरल कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया, तो इसका मतलब साउथ इंडियन कल्चर का हम एक पिक्चर लेकर के चल रहे हैं। ये चोला के पीरियड का साउथ इंडिया कल्चर या फिर होयसलास के पीरियड का साउथ इंडियन कल्चर, और नया साउथ इंडियन कल्चर आप सही बोल रहे हो कि इस पीरियड में और जगहों पे भी कल्चरल एक्सप्रेशन हो रहा था। ऐसा नहीं है दैट इट वाज बीइंग रन ओनली बाय द विजयनगर एम्पायर, बट वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन क्रिटिकली एनालाइज होता तो वहां पे आप कर सकते थे, ठीक है? यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे सीधे पूछा है वाई, तो आपको सब्सटैंशिएट करना है, उसके पीछे फैक्टर्स देना है। सर अगर 10 मार्कर होता है क्वेश्चन तो वहां पे भी सेम चीज करनी होती है आपको, तो वही है आपको फिर, तो आप इंट्रोडक्शन को भी शॉर्ट इन करोगे, बोलोगे फॉलोइंग द दिल्लीज कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया कल्चरल प्रोडक्शन ओवर देयर came to a standstill and Vijayanagar was now tasked with reviving it, ठीक है? क्या जीएस का, जीएस वाले क्वेश्चन में भी आप ये सेम चीज ही करोगे, उसमें और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है ना आपको करने के लिए। हाँ, जीएस वाले में आपको हो सकता है कि फैक्टर्स के ऊपर तो ज्यादा फोकस नहीं करना होता, आप सीधे बताते हैं कि पहले क्या था, विजयनगर में क्या हुआ, ठीक है? फैक्टर्स नहीं बोलते आप वहाँ पर। जैसे स्कीमेटिक्स का मतलब कुछ भी वेन डायग्राम के थ्रू या फिर हाँ कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे यहाँ पर? तो मतलब अगर सपोज 10 मार्कर है और हमें फैक्टर्स देना तो बस ऐसे करके 4 फैक्टर्स। अच्छा हाँ, फैक्टर्स भी आप उस तरह से दे सकते हो, यस। हाँ, तो आप कोई फ्लो चार्ट बना करके फैक्टर्स, हाँ फैक्टर्स में गोला बनाया और उसके बाद 4 फैक्टर्स बता सकते हो। हाँ, यू कैन डू दैट, बट ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इट शुड नॉट बी impoverishing your answer। जीएस के आंसर की तरह लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इट शुड नॉट बी टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ योर आंसर, ठीक है? रादर इट शुड बी एडिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू योर आंसर। अगर आप स्कीमेटिक यूज करते हो, इस तरह का कोई डायग्राम यूज करते हो, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी वुड बी टू राइट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड अ कंक्लूजन आफ्टर दैट। तो यानी कि एक छोटा सा हेडिंग दे दो कि भाई आप डिफाइन कर दो कि क्या कर रहे हैं, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस और दिस ग्राफिक इट बिकम्स क्लियर दैट मल्टीपल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई डिग्री ऑफ क्वालिटी कल्चरल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। इस तरह से बोल दिया। केवल ऑन इट्स ओन स्टैंड अलोन लिखते हो तो इट सीम्स अ लिटिल अब्रप्ट, हो सकता है कि कनेक्ट ना बन पाए, राइट? तो क्या है उसको बता दो और उसका एक कंक्लूजन दे दो, एसेंस बता दो उसका, ठीक है? मैप यूज करने जैसे विजयनगर को कोई और भी क्वेश्चन पॉलिटिकल, हाँ, तो मैप यूज कर सकते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो भी आप डायग्राम या फिर मैप वगैरह बनाते हैं ना, पूरा पेज नहीं कवर करना चाहिए। साइड में एक छोटा सा बॉक्स बनाओ, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपका आंसर शीट का एक पेज है, तो आपको मैप बनाना है विजयनगर एम्पायर का, तो चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पर छोटा सा मैप बनाइए, और पूरे इंडिया का मैप नहीं बनाना है, उस रीजन का बनाना है, ठीक है? तो ये जल्दी से बन भी जाता है, अटेंशन भी ज्यादा नहीं जाता अगर इनएक्यूरेट है तो, और इट सर्व्स अ वेरी गुड पर्पस ऑल्सो, क्योंकि आप इसके अराउंड अपने टेक्स्ट को रैप कर सकते हो, इट सीम्स नीटली एम्बेडेड इन योर आंसर। और अगर बॉर्डर वगैरह नहीं यूज कर रहे हो, पूरा पेज लेकर के बना रहे हो, तो दैट ब्रेक्स द नैरेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल कि पन्ना पलट के दूसरे एग्जामिनर को देखना पड़ेगा। सेकेंडली, जो आपके मैप में इनएक्यूरेसीज हैं दे आर मैग्निफाइड, ठीक है? सो आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो आपके आंसर में कमियां हैं उनको मिनिमाइज करें, और जो अच्छे क्वालिटीज हैं वहां पर ड्रॉ अटेंशन टू दोज, ठीक है? इसीलिए कोई भी हेडिंग लिखते हो तो उसको हमेशा बॉक्स में डाल देना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट फ्रेजेस लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर देना चाहिए, ठीक है?
इस तरह से करो। अब आई वुड नॉट एडवोकेट कि अलग अलग कलर के पेन यूज करो, क्योंकि फ्रैंकली टाइम नहीं होता है उतना, बट इफ यू हैव डेवलप दैट एबिलिटी तो उसको यूज जरूर करिएगा, ठीक है। ट्राई टू मेक योर मैप्स ऑल्सो इन पेन ओनली, ठीक है, उसके लिए पेंसिल मत यूज करिएगा। तो हाँ, ग्रीन, ब्लैक और ब्लू, ग्रीन और रेड नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज यूजुअली वो एग्जामिनर जो है ग्रीन या रेड यूज करके उसको एवेलुएट करते हैं। हाँ, अब मेंशन भी होता है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, हो सकता है मेंशन भी हो। और जो ब्लू का शेड है ना, वो भी स्टैंडर्ड वाला होना चाहिए, पायलट पेन वाला या फिर जो आपका बटरफ्लो पेन होता है उसका शेड होना चाहिए। कई वाले होते हैं बहुत अतरंगी टाइप के, बहुत लाइट शेड्स होते हैं, वो वाला मत यूज करिएगा। जो स्टैंडर्ड शेड होता है ब्लू का, इंडिगो ब्लू, वो वाला यूज करना है, ठीक है। राइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, shed light on the historiography of the emergence and nature of medieval Indian Bhakti। तो यहाँ पे हमको केवल इमर्जेंस और नेचर, इमर्जेंस के पीछे फैक्टर्स नहीं बताने हैं, नेचर के पीछे रीजंस नहीं बताने हैं, और उनके फीचर्स नहीं बताने। वी नीड टू टॉक अबाउट द हिस्टोरियोग्राफिकल ओपिनियंस एक्सप्रेस्ड अबाउट देम। आइडिया है इसके बारे में या नहीं है? नहीं पढ़ा है? शुरुआत कैसे कर सकते हैं बिफोर वी डिस्कस द हिस्टोरियोग्राफी? सिंस वी नीड टू टॉक अबाउट हिस्टोरियोग्राफी, उसकी कोई भूमिका बतानी चाहिए ना। कैसे बनाओगे? इतने सारे हिस्टोरियंस ने क्यों लिखा भक्ति के बारे में? अरे भाई, क्योंकि मेडिवल इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर कल्चरल एंड सोशल मूवमेंट इमर्ज हुआ वो भक्ति ही था। इट had the elements of both unity as well as diversity, and to this very date it continues to shape the basic identity of Indian society। तो लाजमी है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस उसको स्टडी करने के लिए क्यूरियस होंगे, के लिए एक्साइटेड होंगे। दैट इज वाई डिफरेंट सेट्स ऑफ ओपिनियंस अबाउट भक्ति, ठीक है। नाउ वी कम टू द एक्चुअल हिस्टोरियोग्राफी। तो एक डिबेट इमर्ज हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस कि भक्ति के रूट्स क्या हैं। तो इज भक्ति हैविंग इंडिजिनस रूट्स या फिर उसके इस्लामिक रूट्स हैं? क्लियर? तो इंडिजिनस रूट्स को सपोर्ट करने वाले हिस्टोरियन आरजी भंडारकर, और इस्लामिक रूट्स को आरसी ज़ेनिर। आरजी भंडारकर क्या बोलते हैं? ही एम्फसाइज्ड ऑन भक्तिज इंडिजिनस रूट्स, viewing it as a natural evolution of earlier devotional practices within Hinduism। उन्होंने क्या बोला? भक्ति इज नॉट अ medieval phenomenon, उसके बहुत पुराने रूट्स हैं। इट emerged as early as the early Christian centuries, फर्स्ट सेंचुरी एडी में ही इमर्ज हो गया था विद महायान बुद्धिज्म, एंड देन विद इन हिंदुइज्म थ्रू वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म, इट कंटिन्यूड टू डेवलप। साउथ इंडिया में भी तमिल भक्ति हुआ। So this was simply a revival of those movements. It was nothing new. Clear? This perspective highlighted continuity and development within the Hindu religious framework. In contrast, scholars such as R.C. Zainir argued for significant Islamic influence on bhakti, particularly in its later phases. ये क्या बोलेंगे? That medieval bhakti is different from ancient bhakti. क्या? Medieval bhakti was a popular bhakti, ancient bhakti was an individualistic bhakti, ठीक है। और यहां पर मेजर इन्फ्लुएंस किसका आएगा? सूफिज्म का आएगा। फर्दर, मेडिवल भक्ति में देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ मोनोथिज्म। दो तरह की भक्ति इमर्ज हुई, शगुन भक्ति एंड निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति वाज मोनोथिस्टिक, एंटी आइडल वर्शिप, एंटी रिचुअलिज्म भक्ति। ये एलिमेंट्स कहाँ पे, कौन से रिलीजन में मिलते हैं? ट्रेडिशनल हिंदुइज्म में या फिर ऑर्थोडॉक्स इस्लाम में? इस्लाम में। सूफिज्म में भी मिलते हैं, नॉट ओनली ऑर्थोडॉक्स इस्लाम बट लिबरल इस्लाम आल्सो, ठीक है। दे सजेस्टेड दैट इंटरेक्शंस विद द इस्लामिक सूफिज्म introduced new theological and devotional dimensions to bhakti, shaping its doctrinal and organizational aspects। तो डॉक्ट्रिन भी और बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी
सूफीज की तरह सूफी जैसे खानकाज बनाते थे, सिलसिलात बनाते थे। भक्ति सेंट्स क्या बनाने लग जाएंगे? पंथ और आश्रम बनाने लग जाएंगे। ठीक है। देन यूसुफ हुसैन, who came a little bit later, said that bhakti may be divided into two phases: early bhakti and later bhakti. Early bhakti, he said, was medieval bhakti, oh, sorry, ancient bhakti. Later bhakti was medieval bhakti, right? Early bhakti characterized by individualistic spiritual experiences, and later bhakti marked the emergence of a more organized bhakti movements influenced by Sufi ideas and practices. This periodization reflects changes in the nature and expression of bhakti over time. So in one sense, Yusuf Hussain साहब क्या कर रहे हैं? He is still manning the interpretation given by R.C. Zainir. R.C. Zainir ने बोला that bhakti as a whole emerged in association with Islam. उसके पहले कोई कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति होता ही नहीं था, राइट? इन्होंने एक करेक्शन किया यूसुफ हुसैन ने, क्या बोला? भाई पहले वाला भक्ति भी होता था, लेकिन पहले वाला भक्ति अलग किस्म का होता था, नया भक्ति अब अलग किस्म का है. इट हैज बीन हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इस्लाम. ठीक है. देन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस क्या बोलेंगे? दे आर गोइंग टू ट्राई एंड लिंक इट विद क्लास स्ट्रगल एंड प्रोडक्शन. ठीक. कैसे? इरफान हबीब, he would say that bhakti was a kind of social protest. किसका social protest? Against what? A social protest of the underprivileged sections of the population, of the lower caste, untouchables. Against what? Against the discriminatory socio-economic system that was serving only the elites. ठीक है. So it is going to be an expression of their dissatisfaction, their rejection of the established principles and doctrines, and promotion of a new philosophy. तो एक्चुअली ये करने की क्या कोशिश कर रहे हैं? स्वर्ग के दरवाजे सबके लिए खोलने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज द आइडिया. जो पुराने सिस्टम्स थे, दे वर एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्टिव, दे वर डिस्क्रिमिनेटरी. स्पिरिचुअल परस्यूट्स वर नॉट अवेलेबल टू एवरीवन. ठीक है. तो ऊंच नीच का पापड़ा चलता था, अनटचेबिलिटी होता था. टेम्पल्स में अगर भक्ति करनी है, so you would need a particular caste status, right? Then if you want to receive the spiritual guidance of the ulema, तो वहां पे भी आपको एक पर्टिकुलर क्लास का होना होगा. अगर आप कॉमन क्लास के हैं, तो इस्लामिक कम्युनिटी, ऑल्दो इट इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ एगालिटेरियनिज्म, लेकिन वो केवल थियोरेटिकल आइडिया होता है, राइट? इस्लामिक कम्युनिटी इन इंडिया फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस: the ashraf or ashrafia, that is the elite class, and the commoner class. उनको क्या बोलते थे? अजलाफ क्लास और अजलाफिया या फिर अरजाल क्लास. ठीक है. फर्दर, not only class based division of society but also ethnic division or racial division of society was taking place within Islamic society. ठीक है. तो जो फॉरेनर्स हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे, जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको इंफीरियर मानते थे, राइट? ये डिस्क्रिमिनेशन भी था. तो बोथ विद इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम क्या देखने के लिए मिलता है? डिस्क्रिमिनेशन. So this was the spiritual and social protest against that discriminatory regime. ठीक है. Secondly, after the establishment of Delhi Sultanate, कोई major economic changes हुए? क्या? Beginning of third urbanization started taking place. ठीक है. अब ये थर्ड अर्बनाइजेशन और जो एस्टैब्लिश्ड इंडियन सोशल स्ट्रक्चर था, ये एक दूसरे के साथ अलाइंड थे या नहीं थे? नहीं थे. द हाईली डिस्क्रिमिनेटरी एंड रिस्ट्रिक्टिव वर्णाश्रम धर्मा सिस्टम प्लेस्ड वेरी सीवियर चेक्स अपॉन सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी. कास्ट के हिसाब से ऑक्यूपेशनल रूल्स एस्टैब्लिश किए गए थे. पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, were they allowed to leave their occupation or were they required to permanently continue their occupation? Permanently continue with their own occupations only. Secondly, spiritual pursuits में engage करने के लिए, for example, आपको भक्ति ही करनी है, क्या चाहिए होगा? You would need a particular caste and gender. ठीक है. तो वर्ण आश्रम धर्मा क्या बोलता है? That the sannyas ashram, becoming a renunciant,
that is available only to the upper caste, to the Dwij, and only to the males. So only Dwij males would be allowed to pursue bhakti, जो पुराना सिस्टम था. अब ये जो नए वाले सिस्टम्स इमर्ज हुए, फॉर एग्जाम्पल दी निर्गुण भक्ति सेक्ट्स, ये क्या किसके ऊपर एम्फेसाइज करेंगे? आर दे गोइंग टू से दैट रिनंसिएशन इज एसेंशियल फॉर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट? नो, they would say कि a healthy balance between material and spiritual life is necessary. You do not need to renounce the worldly life. Rather, you simply need to exhibit love for God, have a pure heart and pure mind. मन चंगा तो कटौती में गंगा. कोई जरूरी नहीं है कि आप वेदों का पाठ करिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप गंगा में नहाने जाइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में चढ़ावा चढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं है कि आप हज परफॉर्म करने के लिए मक्का जाइए, कोई जरूरी नहीं है कि जुम्मे की नमाज में आपको हाजिरी लगानी ही होगी. क्या जरूरी है? कि मन साफ होना चाहिए एंड एक हेल्दी बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, दैट इज द आइडिया. कबीर, throughout his life, even when he became a prominent preacher, did he ever give up his original profession of weaving cloth? No, he continued to practice the profession of a julaha from the very beginning to the very end, and he also instructed his followers to do the same. Okay? So this was also an attempt by the leaders of the new bhakti movement to overcome the restrictions placed by the traditional society on occupational mobility. It was done to align the economic aspirations of the common people with the changing economic needs. Is this clear? तो ये बोला है किसने? मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने. Then there is another idea that bhakti emerged as a medium to resolve social tensions through integration and assimilation. ठीक है, तो ये कौन बोलते हैं? Another prominent bhakti theme prominent theme in bhakti historiography is its role in integrating diverse religious and cultural elements. Bhakti movements often assimilated Brahmanical orthodoxy with local traditions and folk practices, fostering a syncretic religious landscape. This integration contributed to bhakti's popularity and adaptability across different regions of medieval India. तो देखो यहाँ पे आइडिया क्या है? That the advent of Islam created two levels of contradictions within Indian society. पहला contradiction था between Islam and Hinduism. Now, due to many progressive features of early Islam, many lower caste Hindus began to voluntarily embrace Islam. क्यों? क्योंकि इस्लाम के अंदर उनको लो कास्ट का स्टिग्मा नहीं झेलना पड़ेगा. Basic principle of equality, universal brotherhood, etc. that would apply to them. They would not have to perform complex and costly rituals in order to attain spiritual nourishment. That was one contradiction. दूसरा contradiction क्या emerge हुआ? It was within Hinduism. Now, ये कैसे emerge होता है? After the arrival of Islam, many intellectuals within the Hindu intellectual stream perceived a major threat कि अगर हमने अपने आप को reform नहीं किया, so the indigenous way of life is going to be completely destroyed, and India is not only going to be politically conquered but also culturally conquered. उसको prevent करना है. ठीक है, कैसे prevent कर सकते हैं? By trying to reform Hinduism from within. Its expression was medieval bhakti. Now, medieval bhakti especially Nirgun Bhakti, was it a status quoist movement or was it a reformative movement?
reformative movement. It had a very strong element of social protest and challenged the established status quo, that is the supremacy of Brahmins within society. ठीक है, तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हुआ बिटवीन मेडिवल भक्ति एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म. ठीक है, did medieval bhakti take place in a particular corner of India or across India? Across India. Did it revolve around the worship of the same gods or different gods? Different gods. Was it expressed in the same same literary medium? Did it have doctrinal similarities या फिर regional diversity होता था? Regional diversity. So there was also division of the Hindu society among various bhakti cults. And this also threatened the Hindu intellectuals. What did they feel? Instead of unifying the different classes, different regions, it has divided the different regions, and thus there is a need to address this division. So there is going to be division versus unification. और वो कैसे अटेन किया जाएगा? Cultural and ideological linkages are going to be established between the socially reformative medieval bhakti and the conservative orthodox Hinduism. So some elements of conservative Hinduism are also going to be adopted along with some regional expressions of faith. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो रप्चर है उसको रिपेयर किया जाएगा. क्लियर? एंड रीजनल लिंकेजेस आर ऑल्सो गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड. कैसे? through the propagation of, अगर सगुन भक्ति है तो सेम गॉड के अराउंड कई जगहों पे कल्ट्स इमर्ज होंगे. फॉर एग्जांपल, वैष्णविज्म वाज एक्सप्रेस्ड इन देयर यूनिक मैनर इन गुजरात आल्सो, इन ईस्टर्न इंडिया आल्सो, इन राजस्थान आल्सो, एंड इन यूपी आल्सो, इन तेलंगाना आल्सो. राइट, अवध भी, तेलंगाना में भी, हर जगह पे होगा. सिमिलरली मोनोथियज्म अगर निर्गुण भक्ति है, so in different linguistic mediums, monotheistic bhakti is going to try and convince people that they are all the children of the same god. क्लियर है? तो हम यहाँ पर इस वाले थीम में कौन से वाले कॉन्ट्रडिक्शन को एड्रेस कर रहे हैं? पहले वाले को या दूसरे वाले को? इस वाले को, दूसरे वाले को. सो विद इन हिंदुइज्म इट performed the task of integrating the diverse religious and cultural elements. समझ में आया है ये? यहाँ पे मैं हिस्टोरियन का नाम लिखना भूल गया था. यू कैन ऐड ओवर हियर. क्रिश्चियन ली नोवित्स्की. along with Satish Chandra and सुनील कुमार, उन्होंने ये आइडिया दिया है. They have addressed the secondary contradiction within Indian society after the arrival of Islam and emergence of Bhakti. Then Bhakti has also been addressed from the perspective of gender. यहाँ पे prominent scholar कौन है? डेविड किंग्सली. क्या बोलते हैं? While some movements exhibited patriarchal tendencies and restricted women's participation, others provided platforms for female devotees to express spiritualism, devotion, and challenge societal norms. Example,
Mirabai, Lal Ded, Akka Mahadevi, and a very strong sense of gender radicalism in some bhakti movements also, such as the Veer Shiva sect or the Lingayat sect. क्या करते थे? They rejected the institution of organized marriage, allowed sexual congress outside the institution of marriage, changed norms with regards to fatherhood, etc. तो ये सब चेंज किया उन्होंने, राइट? सो यहाँ पे हमको एक मिक्स्ड पिक्चर देखने के लिए मिलता है. While some bhakti traditions reinforce patriarchal norms, others completely dismantled them. ठीक है? And those who dismantled them, what were they actually representative of? They were representative of the frustration and helplessness that women had been experiencing for a very long period of time in the established normative society. Okay? And finally, we have the interpretation of bhakti as an instrument of cultural defense and a medium of cultural synthesis. तो जो पुराने हिस्टोरियंस हैं सच एज ताराचंद, वो भक्ति को इस लेंस से परसीव करते हैं. क्या कि आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ इस्लाम एक प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन इमर्ज हुआ है इंडियन सोसाइटी में, दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म. इन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट, bhakti emerged as a cultural defense, Hindu religion and way of life. And further, bhakti and Sufism emerged as bridges connecting the two great civilizational streams. Tarachand has examined its role as a cultural defense mechanism against external influences, particularly Islamic cultural and political dominance. Bhakti provided a framework for preserving and adopting Hindu religious traditions while also facilitating cultural synthesis and exchange. Clear है? Conclusion कैसे कर सकते हैं कि भक्ति को क्या एक रंग में हम रंग सकते हैं? No. It stood simultaneously for various things. It spoke not in a single voice but in multiple voices. Thus, it was a polyphonic movement. It was polyphonic movement, blending both elite and popular elements, both Brahmanical orthodoxy and grassroots spiritual expression, and both Islam and Hinduism. तो फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा था भक्ति? जो सोशल टेंशन इमर्ज हो रहे थे मेडिवल सोसाइटी में, जो फ्रैक्चर्स इमर्ज हो रहे थे मेडिवल सोसाइटी में, इट वाज ट्राइंग टू रिपेयर दोज, इट वाज ट्राइंग टू यूनाइट द इंडियन सोसाइटी. इज दिस क्लियर? आगे बढ़े? पक्का? एक मिलता जुलता सवाल है, आई थिंक यू शुड बी एबल टू एड्रेस दिस नाउ. डिस्कस द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स. तो एक बार इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे या डिस्कस करने सीधे? अगर पुराना वाला सवाल समझ में आया है, आंसर समझ में आया है, देन यू शुड एड्रेस इट. हो जाएगा? चलिए ट्राई करके देखिए. पुटिंग 9 minutes on the board. Your time starts now.
All right. So कैसे एड्रेस करना चाहिए इस क्वेश्चन को? What are the basic demands that we are required to fulfill? Are divided into Social, economic and cultural dimensions or implications of Bhakti and Sufi movement. ठीक है? इंट्रोडक्शन में क्या करना चाहिए if we have to talk about the changes brought about by the Bhakti and Sufi movement in these various dimensions, तो इंट्रोडक्शन के लिए गुड स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? ये emerge कैसे हुआ? कैसे हुआ ये जेनेसिस बताओगे? फॉर एग्जांपल क्या बताओगे? सर इस्लामिक एडवेंट के साथ काफी अपीयर्स किए थे सोसाइटी में। अच्छा, तो बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इमर्जेंस ऑफ भक्ति एंड सूफिज्म. जो इंटेलेक्चुअल्स एक्टिव थे बिहाइंड द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स, व्हाट वर देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड व्हाट वाज इट? As a response to orthodoxy. Primarily to solve various problems prevalent in medieval society. ठीक है, तो शुरुआत वहीं से होनी चाहिए that the Bhakti and Sufi movements emerged as timely responses to address the various socio-economic, political, cultural and religious fissures that had emerged in medieval Indian society. तो सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम था? ऊंच नीच का पापड़ा, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, रिलीजन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पॉलिटी में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कल्चर में देयर वाज सप्रेशन ऑफ कल्चर, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिजिनस कल्चर, राइट? ये चल रहा था. इकोनॉमी में द इकोनॉमी वाज चेंजिंग बट द सोशल नॉर्म्स वर नॉट अलाउइंग द सोसाइटी टू चेंज विद दोज नॉर्म्स, राइट? तो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस थे इकोनॉमिक एक्सप्रेशन के लिए. It was these things that Sufi and Bhakti movements were trying to resolve. पहले हम एड्रेस करेंगे सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस को एंड देन कल्चरल इम्प्लीकेशंस को. ठीक है, तो शुरुआत में हम कैसे कर सकते हैं? The Bhakti and Sufi movements emerged as timely responses to resolve pressing issues such as social inequality, caste discrimination, economic disparities, cultural rigidity, political oppression and religious orthodoxy. तो एक लाइन में आपने वो प्रॉब्लम को पोज कर दिया that Bhakti and Sufi movements were trying to solve. These movements had a profound impact on socio-economic, and political impact. फर्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. किस डायमेंशन, किस एंगल के थ्रू हम इसको टैकल कर सकते हैं? चैलेंजिंग कास्ट एंड सोशल हायरार्कीज, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस एंड रोल इन अग्रेरियन सोसाइटी. ठीक है, तो हाउ डिड द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट चैलेंज्ड कास्ट एंड सोशल हायरार्कीज? Did they accept the established Islamic and Hindu religious doctrines, scripture, traditions, practices, या उनको रिजेक्ट कर दिया? रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, and as part of their rejection of those systems, they also rejected the hierarchies that were embedded in those systems. Instead, they professed equality and inclusion. Both Bhakti and Sufi traditions preach the essential equality of all human beings before God, directly challenging the rigid caste hierarchies and social divisions of the time. Then कुछ examples भी आप यहाँ पे cite कर सकते हो. Saints like Kabir and Guru Nanak spoke against caste discrimination, promoting the idea that devotion to God transcended social status. They also had a profound impact on social mobility by emphasizing personal devotion and inner purity over ritualistic practices. These movements allowed individuals from lower caste and marginalized communities to find the spiritual and social recognition. So, in essence, what were they doing? They were democratizing religion. जिनको पहले access नहीं था, उनको अब access दे रहे थे ये. This contributed to a gradual, albeit limited erosion of caste barriers. Clear है? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं. You can add the gender dimension also. You can also talk about the idea that God different नहीं है. God is one, unity of God, and therefore
वी एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड आर ऑल्सो वन। तो हमारे बीच में चाहे धर्म हो जाए, चाहे लैंग्वेज हो जाए, चाहे रीजन हो जाए, चाहे कास्ट हो जाए, इसमें जो भी डिस्टिंक्शंस हैं, चाहे जेंडर हो जाए, all of those are also artificial distinctions। एक्चुअल में नेचुरली कोई डिस्टिंक्शन है नहीं, ठीक है। सो एक कैथलिक अप्रोच या फिर यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच टू सोसाइटी वाज टेकन बाय द भक्ति एंड सूफी सेंट्स। इकोनॉमिक implications, the Bhakti and Sufi movements also emerged as important support structures for the common people, and the khangas and ashrams of the Sufi and Bhakti saints emerged as centers for promotion of economic activity also. Kaise? The egalitarian ideals of the Bhakti and Sufi movements often translated into support for the economic well-being of the common people. Many Bhakti saints and Sufi mystics advocated for just and compassionate treatment of the poor and downtrodden, indirectly promoting social welfare. They even directly promoted social welfare also. कैसे? कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? Charity works. Suravardi Silsilas were more of a materialistic. They use their power influence in the court for the benefit of the common people. और बताओ, बहुत सारा इनको फुतू मिलता था, दान दक्षिणा मिलता था। क्या करते थे उस दान दक्षिणा फुतू का? डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, उसका लंगर करवा देते थे। गुरु नानक इंट्रोड्यूस दिस प्रैक्टिस, लंगर करवा देना। देन किसी गरीब को शादी करवानी है अपने बच्चों की, उसको पैसा दे दिया, उसको जगह दे दी शादी करवाने की, उसके तरफ से दावत दे दी, राइट। कहीं पे अगर फैमिन पड़ रहा है तो कहाँ से फूड आएगा? यही इन्हीं लंगर से आएगा, राइट। कहीं पे सूखा पड़ गया है, हु इज गोइंग टू फंड द कंस्ट्रक्शन, द डिगिंग ऑफ वेल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स? It is the Sufi khangas and Bhakti ashrams etc. Right? तो both direct and indirect means के through एक social security net बनाया। Clear है? And they were able to reach the common people. Why? क्योंकि शुरुआत से ही they were embedded among the common people. They were not elite institutions. एक तो elite religious institutions हो गए, for example ब्राह्मण्स हो गए या उलेमास हो गए, वो common people के साथ किस तरह का relationship रखेंगे? बराबरी का या ऊंच नीच वाला? ऊंच नीच वाला। और ये लोग बराबरी का, ठीक है। तो दे वर ऑलवेज एम्बेडेड इन दी कॉमन मिलियू, इन दी कॉमन एनवायरनमेंट। दे हैड ऑलवेज बीन पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, दैट इज द आइडिया। देन दे आल्सो इमर्ज्ड एज सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे? टाउन्स एंड मार्केट्स डेवलप हुए उनके खानकास के अराउंड, दरगाह के अराउंड, खानकास के अराउंड, दरगाह के अराउंड टाउन्स एंड मार्केट्स डेवलप हुए। दे इमर्ज्ड एज प्रोमिनेंट साइट्स ऑफ पिलग्रिमेज। तो वहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स हर साल जाते थे, इंपॉर्टेंट रिलीजियस ओकेजन्स के ऊपर स्पेशली। तो वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर भी पहुँचने लग गए उन विजिटर्स को केटर करने के लिए। दे एस्टैब्लिश देयर परमानेंट रेजिडेंस इन दोज रीजन्स। अब एक नया रीजनल इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो गया। अब ये जो खानगाहs हो गए या फिर दरगाहs हो गई, they also emerged as meeting places for merchants। यहाँ पर सिक्योरिटी भी अच्छा होता था, डाकू डकैत भी नहीं पहुंचते थे। तो इस वजह से they also attracted a large number of travelers, traders, merchants, bankers। इन सूफी खानगाहs और आश्रम्स को दान भी बहुत सारा मिलता था। They did not hoard this wealth, they started to lend this money to traders and manufacturers etc. ठीक है। So they emerged as engines for urban development। क्लियर है? अजमेर, हजरत निजाम, दोनों एग्जाम्पल दे सकते हो। गुलबर्गा का एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट आप फतेहपुर सीकरी का एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। सो वहां पे भी हाँ चिश्ती सेंट्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। देन द रोल ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स इन द अग्रेरियन सोसाइटी। कैसे? लैंड एंड रिसोर्स मैनेजमेंट में भी और चैरिटेबल एक्टिविटीज में भी। अब ये ज्यादातर सूफी खानगाहs या फिर भक्ति सेंट्स के आश्रम्स के सेटिंग में प्रेजेंट थे। अर्बन सेटिंग में या रूरल सेटिंग में? रूरल सेटिंग में, फार फ्लंग रीजन्स में प्रेजेंट थे, राइट। हुआ क्या इसकी वजह से? यहाँ पे पिलग्रिमेज होने लग गया, जो बगल वाला एरिया था वहां पे फॉरेस्ट को हटाया गया। दीज लैंड्स वर प्रिपेयर्ड फॉर कल्टिवेशन एंड सेटल्ड बाय द वेरियस फॉलोअर्स ऑफ द सूफी खानगाहs, ठीक है। अब ये जो रिसोर्सेज थे या तो खुद मैनेज करते थे और इनडायरेक्ट मैनेजमेंट होता था इनका, ठीक है। फ्रॉम हियर दे ड्रू एडिशनल इनकम आल्सो। तो रूरल इकोनॉमी को भी प्रमोट किया इन्होंने। फर्दर
सिंस दे इमर्ज्ड एज सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक अर्बन ग्रोथ, तो क्या हुआ, जो इनके अगल बगल जो रूरल एनवायरमेंट्स हैं, they also came into a more direct link with the urban economy. एक कैश नेक्सस डेवलप होने लग जाएगा। तो जैसे कि हमने पिछले क्लास में देखा था ना कि एक कैश नेक्सस इमर्ज हुआ था बिकॉज ऑफ इक्ताज, उसी तरह का कैश नेक्सस यहाँ पे भी इमर्ज होने लग जाएगा। ठीक है, तो रूरल इकोनॉमी और अर्बन इकोनॉमी के बीच में अ हेल्दी बैलेंस इज गोइंग टू इमर्ज। एक तो ये चीज होगी। Some Sufi orders were involved in agricultural development, managing lands and resources efficiently. This helped improve agricultural productivity and provided livelihood opportunities to the local populace. Then, charitable activities. The practice of futu or unsolicited charity in Sufi khangas and similar practices in Bhakti institutions ensured that resources were redistributed to support those in need, creating a safety net for the economically disadvantaged. ये हो गए socio-economic roles. Cultural roles: promotion of vernacular languages and literature, promotion of art and music, promotion of religious and cultural synthesis, and community and spiritual life, moral upliftment. तो लिटरेचर और लैंग्वेज का प्रमोशन कैसे और क्यों? रीजनल लैंग्वेजेस यूज करते थे बिकॉज दे वर ट्राइंग नॉट टू मेक रिलीजन एक्सक्लूसिव, रादर दे वर ट्राइंग टू मेक इट inclusive in nature, democratize करने की कोशिश कर रहे थे. By preaching and composing devotional poetry in regional languages, both movements played a pivotal role for the development and enrichment of vernacular languages. For example, the works of Bhakti saints like Tulsidas in Hindi and the mystical Sufi poetry of saints like Shah Abdul Latif in Sindhi enriched the literary heritage of these languages. Literary contributions: the devotional songs, hymns, and poetry produced by Bhakti and Sufi saints became an integral part of the literary and cultural traditions of their respective regions, fostering a rich and diverse literary culture. For example, पंजाबी में लिटरेरी मूवमेंट शुरू कहाँ से होता है? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर के साथ। ग्रो किसके साथ होता है? गुरु नानक के साथ। और मैच्योरिटी किसके पीरियड में आती है? गुरु अर्जुन देव के पीरियड में, हु कंपोज दी आदि ग्रंथ, राइट? Art and music, musical innovation and syncretization of art. म्यूजिकल इनोवेशंस क्या इमर्ज होगा भक्ति और सूफी मूवमेंट के साथ? भजन कीर्तन और कव्वाली, नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होने लग जाएगा. न्यू थीम्स आर गोइंग टू इमर्ज एंड द kind of expression is going to change as well. Relationship between man and God had been reimagined in the form of not simply a relationship between the creator and the created, but as the relationship between lover and the beloved. तो रोमांटिक लव का इसमें मोटिव ऐड हो जाएगा, रोमांटिसाइज कर दिया जाएगा इसको. ठीक है, तो जिसको पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते, इस तरह के आइडियाज, राइट? द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंडियन म्यूजिक. The Bhakti traditions contributed to devotional forms such as bhajans and kirtans, while Sufi traditions helped develop the Qawwali. Syncretization: the blending of Hindu and Islamic elements in the art and architecture associated with Bhakti and Sufi institutions created unique syncretic cultural aesthetic. The fusion is evident from various forms of visual art, including temple and mosque architecture, and in the designs of religious manuscripts and various artifacts also, right? प्रमोशन ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल सिंथेसिस कैसे? हमने देखा है प्रीवियस क्वेश्चंस में, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट बोथ इमर्ज्ड एज कल्चरल ब्रिजेस बिटवीन द सिविलाइजेशंस ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम. They began a cultural interfaith dialogue, or they began an interfaith dialogue. Both movements encouraged interfaith dialogue and understanding. The emphasis on the unity of God and commonality of spiritual goals fostered a climate of mutual respect and cultural exchange between Hindus and Muslims. Influence on mainstream religion: the inclusive and reformist messages of the Bhakti and Sufi saints influenced mainstream Hinduism and Islam, encouraging a more tolerant and humane approach to religious practice and relations as well. ठीक है, तो लोअर लेवल पे भी और अपर लेवल्स पे भी देयर इज गोइंग टू बी अ रीचिंग ओवर, अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग. ऑलराइट, देन community life, community and spiritual life. Bhakti and Sufi movements resulted or worked towards the creation of egalitarian communities and the spiritual and moral upliftment of this community. Egalitarianism कैसे?
rejection of the caste system, rejection of any artificial divisions, the idea of unity of God, etc., monotheism, the establishment of egalitarian communities around Bhakti ashrams and Sufi khangas provided spaces where individuals from diverse backgrounds could come together in devotion and service, fostering a sense of community and collective spiritual life. Spiritual and moral upliftment. The teachings of Bhakti and Sufi saints emphasized ethical conduct, compassion, and service to humanity, contributing to the moral and spiritual upliftment of society. ठीक है, कंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम इसको? एक समेटिव कंक्लूजन दे सकते हैं, समराइज कर सकते हैं. In conclusion, the Bhakti and Sufi movements were instrumental in shaping the socio-economic and cultural landscape of medieval India. They promoted social equality, economic welfare, and cultural richness, leaving a lasting legacy that continues to influence Indian society and culture even today. तो समेशन के साथ मॉडर्न सोसाइटी के साथ लिंक कर दो इसको. क्लियर है? आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन. Evaluate the impact of the Sufi and Bhakti movements on vernacular languages and life and thought of the common people. Now, this is quite similar to the previous question. यहाँ पे हमें लेकिन ज्यादा अटेंशन किसके ऊपर देना होगा? लैंग्वेजेस के ऊपर. वहां पे ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर वहां वो करना था. यहाँ पे भी सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर के बारे में बात करनी है, बट इन द सेकंड पार्ट ऑफ आवर आंसर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल. लेकिन मेजर एम्फेसिस होगा लैंग्वेजेस के ऊपर. अब ये बताओ, व्हाई डिड द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस? ठीक है, एक तो प्रैक्टिकल रीजन है कि अगर लोगों में पॉपुलैरिटी चाहिए तो उनकी लैंग्वेज यूज करनी है. फारसी या फिर संस्कृत यूज करोगे तो आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या बात कर रहे हो. एग्जैक्टली. Further, they were trying to register a note of social protest. ठीक है, they found it impossible to do so within the language of the orthodox religions. Since many of these reformers came from lower caste backgrounds, तो उनको संस्कृत या फारसी का ज्ञान भी नहीं था. ठीक है, सो प्रैक्टिकल कंपल्शंस भी थे, प्रैक्टिकल रीजंस भी थे और आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स भी थे इसके पीछे. ठीक है, व्हाई दे यूज्ड वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस, एंड these factors should constitute your introduction. तो इंट्रोडक्शन में आपको यही बैकग्राउंड why बताना है. ठीक है, कैसे? The Bhakti and Sufi movements challenged the sanctity of orthodox religious traditions which were out of tune with the aspiration of the masses. They preached through the vernaculars in the local dialects. Further, they registered a strong note of protest against the rigid hierarchy, social exclusion, and brutal oppression of both the Hindu and Islamic orthodoxy. ठीक है, तो आपने बता दिया है why vernacular languages. अब क्या बताना है? which vernacular languages और कौन कौन इन्वॉल्व था उसमें. तो हम इनको अलग अलग रीजन्स के थ्रू रीजनल एनालिसिस कर सकते हैं. साउथ इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, वेस्टर्न इंडिया में और पंजाब, मराठी एटसेट्रा. ठीक है, साउथ इंडिया, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा. तमिल emerged with Tamil Bhakti, Alvars and Nayanars, Dev Prabandham, Devaram, Divya Prabandham, Devaram, etc. ये सब उन्होंने कंपोज किया. तेलुगु में ड्यूरिंग द रेट ऑफ कृष्ण देव राया, वैष्णवाइट भक्ति एक्सप्रेस्ड इन तेलुगु, अल्लासानी पेडना जैसे आपने बताया. अलॉन्ग विद दैट तेलुगु महाभारत बाय नन्ना, अदर स्कॉलर्स सच एज टिकन्ना, Erra, Paragda, etc. Vaishnavism's influence during the Vijayanagar reign further enriched Telugu literature. Kannada, under which cultural stream? Basavanna's Lingayatism or Veer Shaivism. It contributed significantly to this literary tradition. Earliest work of Shaivite Kannada literature क्या? शैवाइट कन्नड़ा लिटरेचर, यानी कि वीर शैविज्म का. दी वचन शास्त्र ऑफ बसवन्ना. ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में बंगाली, ओडिया, आसमीज एंड मैथिली. बंगाली में मेजर कंट्रीब्यूटर्स
चैतन्य महाप्रभु एंड चंडीदास। चंडीदास पहले, चैतन्य महाप्रभु बाद में। ओडिया में सरला देव, राइट। असमीज भक्ति में शंकर देव, followed by the Madhavas, who were the followers of the Assamese Bhakti movement. And Maithili में poets such as Vidyapati. Western India, Rajasthani and Gujarati. Rajasthani, Mirabai. Gujarati, Narsingh Mehta. Punjabi, Baba Farid, Guru Nanak and Guru Arjun Dev. Marathi, महाराष्ट्र धर्मा सेंट्स, राइट, उन्होंने मराठी में प्रमोट किया। हिंदी, सूफी सेंट्स, सबसे पहले आमिर खुसरो, देन निजामुद्दीन औलिया, देन the Vaishnavite Bhakti saints such as Ramanand or Saint Kabir, sorry, Tulsidas, then other Nirgun Bhakti saints such as Kabir, etc. Then Sena, Pippa, etc., who are all followers of Kabir. हाँ, मतलब वो उसी लैंग्वेज को हिंदी भी बोलते हैं, हिंदुस्तानी भी बोलते हैं, हिंदवी भी बोलते हैं, रेखता भी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी अगर हम बोल रहे हैं तो इसका वही मतलब है। उर्दू, सूफी सेंट्स एक्सटेंसिवली यूज्ड उर्दू विद पोएट्स सच एज आमिर खुसरो, मिरांजी, शमसुल उशाक composing verses that merged mystical and erotic themes, thus enriching Urdu literature, ठीक है। तो ये हो गया impact on the proliferation of regional literature। तो हर जहां पे क्या देखा है हमने, vernacularization of languages and literature is going to take place under the influence of both Bhakti as well as Sufi movements। Impact on the life and thought of the common people, तो हम इसको भक्ति मूवमेंट के इम्पैक्ट और सूफी मूवमेंट के इम्पैक्ट के थ्रू, सॉरी, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के इम्पैक्ट के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो हेडिंग है दैट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, सर इंट्रो में हमने लैंग्वेज वाले पार्ट को वो किया फोकस के, बट लाइफ एंड थॉट वाले का वी हैवंट मेंशन्ड इट। अब यहाँ पे आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि इंट्रोडक्शन में आपको पूरे के पूरे आंसर को का बैकग्राउंड प्रोवाइड करना है। आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट like vernacular languages, the Bhakti and Sufi movements also profoundly affected medieval society, economy, culture, philosophy, and polity. So every aspect of human life during the medieval age. And then we can start discussing social reform. This we have already addressed, पुराने वाले questions है. Religious unity, this also we have addressed. Political influence, बताओ. How did they politically influence the decision making of the sultans and the other elites? ये politically किसके aspirations को represent कर रहे थे? Common people के, ठीक है? So they acted as a check on the oppressive nature of the sultanate and feudal administration of the medieval period, ठीक है? They emerged as champions and advocates of the interests of the
common people. So that is what they were doing. So overall, they had a democratizing influence on polity. The rulers, since they had to face and withstand the challenge posed by the popularity of the Sufi saints, were forced to also alter their own ideology. Example कोई दिखता है? मोहम्मद बिन तुगलक. क्या किया इसने? He was the first Sultan of Delhi to visit the shrine, visit the dargah of Khwaja Muinuddin Chishti at Ajmer. What was he trying to do? He knew that he had to take panga with the elites of the society. Therefore, he tried to bolster popular support. Kaise? By trying to associate himself with the popular religion, with the Sufism. Educational advancement. Kaise? Khangas mein. Spiritual practices, the Sufi focus on devotion over rituals resonated with many, influencing spiritual practices across religions and boundaries. So philosophy में भी change हो जाएगा. In conclusion, the Bhakti and Sufi movements significantly contributed to the development of vernacular languages and enriched the cultural and spiritual lives of the common people. They fostered social reform, religious tolerance, and a spirit of inclusiveness, leaving a lasting legacy on Indian society and culture. Clear है इतना? आगे बढ़े क्या? Next question. Give an account of the impact of Islam on Indian culture in respect of society, religion, and fine arts during the Delhi Sultanate. Now, इसको स्टडी करने वाले मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरियन कौन है? ताराचंद. ठीक है. So writing in the 1920s, I think he was the first and preeminent historian to study the impact of the arrival of Islam on Indian society, polity, religion, culture, philosophy, etc. तो उन्होंने इसको स्टडी किया है. So I don't know whether I have included his name in the answer or not. पता नहीं, शायद नहीं किया है. But you can do that. ठीक है, आप लोगों को जरूर करना चाहिए. अच्छा, इसको इंट्रोड्यूस कैसे करना है? यहाँ पे आंसर में इंट्रोडक्शन नहीं है. क्या? The advent of Islam. Was it a minor development in Indian history or a major watershed of Indian history? Was a watershed of Indian history, marking the beginning of a new age. And permanently altering the course of Indian history. The noted historian Tarachand has conducted a detailed analysis of the impact of Islam on Indian society, religion, culture, and fine arts. And then we can simply conduct a dimensional analysis. With regards to society, क्या बोलते हैं ताराचंद? The arrival of Islam in India during the Sultanate introduced new social structures and dynamics. Islamic emphasis on egalitarianism influenced the caste-based hierarchical society of India. This resulted in a certain degree of social mobility as people of lower castes converted to Islam. Additionally,
the Islamic community also brought with it new practices, cuisine, dress, and customs which integrated and enriched Indian society. Urbanization also increased under the Delhi Sultanate. Islamic rule facilitated the establishment of new cities and towns and growth of existing ones, fostering trade and crafts. Cities like Delhi, Agra, and Lahore became important cultural and commercial hubs. This urban growth facilitated what? Mixing of different cultures. Why? Cities are always melting pots of culture. अलग अलग लोग यहाँ पे आते हैं. And the spread of new ideas and technologies. Okay? So this was the impact of Islam on society. On religion, क्या effect होगा? ठीक है. What is going to be the response of Brahmanism or Hinduism to the arrival of Islam? Initially, hostility, isolation is going to increase, conflict is also going to take place, destruction and persecution, forcible convergence, ये सब होगा. But later, अंदर से रिफॉर्म करने की भी कोशिश करेंगे और दूसरी स्ट्रीम को समझने की भी कोशिश करी जाएगी. This is going to be facilitated by the emergence of new movements. कौन से? Bhakti and Sufi movements. Bhakti and Sufi movements का impact क्या होगा on religion? They are going to democratize the practice of religion. Orthodoxy जो है, that is going to be challenged. Costly religious customs, rituals, pilgrimages, formalized worship, they are going to lose their significance. Priestly class का importance in society कम होने लग जाएगा. Religiously speaking, the social profile of the common people is going to increase. ये impact होगा religion के ऊपर. Fine arts, development of music, art, literature. Music, art, literature, म्यूजिक, पेंटिंग, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, कई जगहों पे एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलता है हमें, राइट. देन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल एक्सप्रेशन, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल. एंड फाइनली education and learning. The Islamic rule saw the establishment of numerous madrasas that provided education in various subjects including theology, law, science, and literature. These institutions also attracted scholars from different parts of the Islamic world, fostering an environment of intellectual exchange. The emphasis on learning and scholarship during this period contributed to the preservation and dissemination of knowledge, which had a lasting impact on Indian education and intellectual traditions. ठीक है. What did this intellectual tradition facilitate? Greater cultural exchange between Islam and Hinduism. शुरुआत में तो क्या हुआ, नालंदा की यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, लाइब्रेरी ओवर देयर वाज बर्न्ड टू एशेस, इट बर्न्ड फॉर अ टोटल ऑफ मोर देन 3 months, 3 महीने तक जलता रहा. बट लेटर व्हाट हैपेंड? Many Sanskrit works were also translated into Persian and Arabic. They were exported from India as well. Okay? So greater exchange took place. Similarly, many Farsi works were translated into the vernacular languages. If not verbatim, then themes were borrowed, stories were borrowed from them. Okay? So ये cultural exchange अब होने लग जाएगा. The influence of Islam during the Delhi Sultanate was profound and wide-ranging. It brought new cultural, social, and religious dynamics to the Indian subcontinent. The synthesis of Islamic and Indian traditions led to a rich and diverse cultural heritage that continues to influence Indian society even today. The legacy of this period is evident in the architecture, art, music, literature, and social practices that have shaped the cultural landscape of India. Okay? So this is the impact of Islam on society during the culture during the Sultanate period. And final question for today. The mission of Kabir was to preach a religion of love which would unite all castes and creeds. तो कैसे एड्रेस करना है इसको? How should we begin writing this answer? कबीर के बैकग्राउंड से एंड द काइंड ऑफ रिलीजियस आइडियाज ही प्रीच्ड, उसका रीजन क्या था. ठीक है. तो दैट इज ऑल्सो हिडन इन हिज बैकग्राउंड. किस बैकग्राउंड के थे, कहां से थे, पहले तो कहां से थे? बनारस के. ठीक है. किस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे?
जुलाहा कम्युनिटी को. जुलाहाज वर लो कास्ट कम्युनिटी ऑफ वीवर्स. ठीक है. आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, जुलाहा कम्युनिटी ऑफ बनारस, did it remain within the fold of Hinduism to be treated as untouchables, or did it convert to Islam in the hopes of social equality? Largely convert हो गए थे. बता रहा हूं, convert हो गए थे. Were their hopes fulfilled after conversion? Did they get social respect and acceptability? No. क्यों? क्योंकि while in Hindus they had double stigma, not only of being lower caste but also being converts. They had converted. तो अब बाहरी भी हो गए थे और लोअर कास्ट तो रह गए. इस्लाम के अंडर लोअर कास्ट से आए हैं कन्वर्ट होकर के, और ओरिजिनली मुस्लिम्स नहीं हैं. ठीक है. तो ये क्लास बेसिस भी हो गया, कल्चरल बेसिस भी हो गया, और कास्ट बेसिस भी हो गया डिस्क्रिमिनेशन का. Do you think Kabir is going to have a positive attitude towards Orthodox Islam or Hinduism? No. He harbored a very strong grudge against organized religion, and this is going to be reflected in his teachings as well. इनका concept of God जो था, that was shaped by teachings of not only his spiritual mentor, that is Ramanand, but also because of his contact with other saints and movements. He was in contact with the Sufis also. He was in contact with the Nath Panthis also. क्या समझ में आया इनको after interacting with all the different religious communities and their leaders? भगवान अलग अलग हैं या एक ही हैं? एक ही हैं. एंड उनको वर्शिप करने का तरीका क्या होना चाहिए? मूर्ति बना करके पूजा करो, पिलग्रिमेज करो, विसर्जन करो, ये सब नहीं. क्या? Simply the feeling of love and devotion towards God. ठीक है. So love towards God became the basic principal tenet of his teachings. Clear है? अब अगर क्योंकि भगवान एक है, तो क्या हिंदू मुसलमान के बीच में फर्क होना चाहिए? नहीं होना चाहिए. क्या अपर एंड लोअर कास्ट के बीच में फर्क होना चाहिए? It should not be there. Should there be any distinction between men and women? It should not be there. So this became the basis of his Catholicism or universalism. क्या होता है ये Catholicism और universalism? That we are all the children of God, and being children of God deserve to be loving of each other, deserve each other's mutual respect and toleration. ठीक है. So that is what Kabir was preaching. Is this much clear? समझ में आया इतना? अच्छा. Now, since the basic emotion that needs to be expressed in order to attain spiritual nourishment is a devotion and love towards God, तो जो creation of God है उससे आप नफरत कर सकते हो? नहीं. Rather, you should try to appreciate that. अब उसमें घटाएं, फिजाएं, जानवर, पेड़ पौधे, ये सब तो आ ही जाएंगे. और क्या आता है? The topmost creation of God, the most superior creation of इंसान. ठीक है. अब वो इंसान चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, being a true follower and lover of God, you must have the feeling of love towards man as well. ठीक है. You must love your neighbor like your own brother. इस आइडिया को क्या बोलते हैं? The idea of fraternity. ठीक है. So a very strong component of Kabir's teaching was the idea of fraternity. How was Kabir trying to challenge the caste-based society, caste-based discriminations? एक तो through the idea of Catholicism, universalism, monotheism. Secondly, एक economic response भी दिया इन्होंने. क्या? Did he argue in favor of renunciation or against it? Against it. क्या बोला? कि स्वर्ग के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं. कोई जरूरी नहीं है कि आप एलीट बैकग्राउंड से आइए, कि आप अपना अगर घर बार छोड़ भी देते हैं, व्यापार छोड़ भी देते हैं, तो आपकी फैमिली भूखे नहीं मर जाएगी. राइट. एनीबडी कैन एंगेज इन स्पिरिचुअल परस्यूट्स. कोई जरूरी नहीं है कि आपको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, कुरान रटी होनी चाहिए फॉर स्पिरिचुअल नरिशमेंट. यू सिंपली नीड टू एग्जिबिट प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड लव टुवर्ड्स गॉड. सो ही ट्राइड टू डेमोक्रेटाइज इट एज वेल.
ठीक है. सो नॉट ओनली आइडियोलॉजिकल बेसिस पर बट प्रैक्टिकल मीन्स के थ्रू इन्होंने रिलीजन को डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश करी एंड ही ट्राइड टू ओवरकम द एलिमेंट्स ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन. इज दिस क्लियर? अच्छा. नाउ what was the medium of expression that he used while expressing his thoughts? Vernacular language. ठीक है. कौन सा लैंग्वेज? हिंदी इन दी अवधी डायलेक्ट. बनारस के थे तो अवधी में ही बात करते थे. Why? It was accessible to everybody. ठीक है. फारसी बोलोगे या फिर अरबी बोलोगे या फिर संस्कृत बोलोगे तो समझ में आएगी नहीं. सेकेंडली, was Kabir literate or illiterate? Recent researchers claim कर रहे हैं कि he was illiterate. He was largely considered to be illiterate. Traditional idea यही है. Therefore, बाकी languages उनको बोलनी भी नहीं आती थी. ठीक है. So that is why he is making all his compositions in Hindi only. What was the nature of the attitude that he expressed towards the Vedas, the Qurans, etc. Quran, etc. Was he appreciative of them or did he reject the idea of the infallibility of the spoken word, Vedas or Qurans? He rejected their infallibility. क्या बोला? These are not the repositories of truth. अगर असली सच जानना है तो वो कैसे आएगा? Through inner realization. और inner realization कैसे आएगा? Through emotional identification with the divine. और उसके लिए क्या आपको किसी चीज का पाठ करने की जरूरत है? नहीं. किसी पंडित का इंस्ट्रक्शन चाहिए? नहीं चाहिए. You simply need to express your love towards God. And what was he doing with regards to this? Quran या Vedas etc. Upanishads, were they accessible to all castes? Everybody? नहीं. They were available only to the upper caste and the elites. ठीक है. Once again he was trying to overcome the caste based discriminations. Is this clear? अच्छा. Further, जो established mythology है, जो established religious customs और practices हैं, उन्होंने उनको criticize कैसे किया? Open criticism. Did he advocate for the violent overthrow of all these systems or did he simply satirize them? He simply satirized them. So through the medium of ridicule, he tried to challenge the legitimacy of the established orthodox systems. इसका रिजल्ट क्या हुआ? ब्लो बैक बहुत स्ट्रांग नहीं आया. ठीक है. अगर बोलते कि जाओ सारे मंदिर तोड़ दो, मस्जिद जला दो, तो क्या रिएक्शन आता? अगले दिन सूली पे लटका दिया जाता. अभी क्या कर रहे हैं? वहां जाना बंद कर दो. यू डोंट नीड टू विजिट ओवर देयर. व्हाई? क्योंकि ये सब लोग ढोंग कर रहे हैं. दैट इज व्हाट ही वाज ट्राइंग टू कन्विंस द पीपल. Right? And therefore, he was able to shelter not only his ideological movement, but also his followers from the crackdown from the elites. Right? And what was the result? एक ग्रास रूट्स मूवमेंट शुरू कर पाए हैं. ठीक है. फर्दर, आफ्टर हिज डेथ, डिड हिज आइडिया सर्वाइव और डिड द आइडियाज आल्सो डाई विद हिम? द आइडियाज सर्वाइव्ड. एक कबीर पंथी मूवमेंट इमर्ज हो गया which established cultural and intellectual linkages with other low caste Nirgun movements across India. His writings also influenced the thoughts of scholars and saints such as Guru Nanak, Dadu Dayal, and even Baba Farid to a certain extent. Okay? So the intellectual vigor of Kabir was preserved, and through this medium, he was able to continue serving the lower caste masses till long after his death as well. Okay? In fact, इनका जो cultural legacy है, that has been a popular or that has gotten historical attention also. तो contemporary scholars और medieval period के scholars भी इनको refer करते हैं. For example, Abul Fazl refers to him as a muwahid or monotheist in the Akbarnama. He has also noted that a large number of his followers are still present in the Awadh region, Banaras region. Okay? So that is what we can say about this. The mission of Kabir was to preach a religion of love which would unite all castes and creeds.
एक्सप्लेन, ठीक है। कंक्लूड कैसे करेंगे इसको? इंट्रोडक्शन तो हमने बता दिया था कि बैकग्राउंड क्या था उनका, क्या ठीक है। इवन इन द कंटेम्प्रेरी पीरियड हम इनके मूवमेंट के इफेक्ट देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो 19th सेंचुरी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने क्या एडवोकेट किया था? फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन रॉय, एग्जैक्टली द सेम थिंग्स एज कबीर, मोनोथियज्म, एंड ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा, ठीक है। सो कबीर continued to cast an extremely long shadow on Indian history. And कुछ लोगों ने तो इनको मार्टिन लूथर के साथ भी कंपेयर कर दिया है। मार्टिन लूथर was responsible for the Protestant movement in Europe and the reformation of the Catholic Church, right? Now इनको भी उसके साथ कंपेयर कर दिया गया है। Now it is a different matter कि इनके अचीवमेंट्स उतने ज्यादा बड़े नहीं थे। He registered some success, but he was not able to bring about a fundamental change in the nature of medieval state and society. मार्टिन लूथर किंग के जो एफर्ट्स थे, that was able to transform Europe from medievalism to the modern age. वो हमको यहाँ पे नहीं बताने की जरूरत है, सिंपली हम ये बता सकते हैं his contributions can be gauged from the comparisons of his personality with the achievements of मार्टिन लूथर as well. तो उनके साथ कंपेयर किया, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इज दिस क्लियर? समझ में आया है? चलिए देन, इफ देयर आर एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो, अदरवाइज आई शैल एंड दिस लेक्चर। मनीष, कोई डाउट्स हैं? नो डाउट्स? ऑल राइट देन, खत्म करें क्लास को? चलिए, थैंक यू फॉर योर टाइम। और नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन थर्सडे, ठीक है, थर्सडे 8 बजे।